Good evening to all the students. We are back with live revisionary lectures for CA Inter Financial Management. In our previous revisionary lecture, we brushed up the concepts of leverages. We covered few questions from RTP. We also covered case scenario that is there in your module. Today, we would be covering two important aspects of financial management: investment decision and dividend decision. So ideally, every financial manager, or I would say CFO of the company, has to take three decisions in his financial life. कौन से तीन decision होते हैं? One is investment decision, one is financing decision, one is dividend decision. Financing decision you have already revised earlier. Today we would be covering investment and dividend decision. So broadly investment decision में होता क्या है? Investment decision में ये होता है कि whether to invest in the project or not. This is the whole basic background or idea of investment decision. Dividend decision में क्या होता है? Once you have invested in a project or in any business or in any product, वहां से जो आप कमाते हो बिजनेस से, प्रोडक्ट से, प्रोजेक्ट से, what to do with that surplus, that is all about dividend decision. ठीक है? So quickly let's start with investment decision. We have vast concepts to cover, but time constraint we have. Within 2.5 hours, we need to revise both the chapters, investment decision and dividend decision. So let me just share my screen with you all. You all can see my screen, right? Okay. इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको हम लूज टर्म्स में इस चैप्टर को कैपिटल बजटिंग चैप्टर भी बोलते हैं. व्हाट इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर? द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर was very simple. एक ही था लर्निंग ऑब्जेक्टिव, टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट और नॉट. पूरा चैप्टर एक ही डिसीजन पे घूमता था, क्या हमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं. ऑल दिस थिंग was under this chapter, investment decision. एक ही सवाल, whether to invest in the project or not. ठीक है? So whether to invest in the project or not. So this chapter gave us 7 different techniques. कि evaluate using different techniques and see whether it is feasible to invest in the project or not. So can anyone tell me what are the 7 different capital budgeting techniques that you have learned in this chapter? In your regular classes, you have already learned these techniques. So can anyone just quickly write down the name of different techniques in the chat box? First was payback period. Yes. पेबैक पीरियड के साथ आता था डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड. Then you learned about accounting rate of return, ARR, or average rate of return. Fourth was very important, NPV technique, net present value technique. Very important, highly asked, highly used in practical world. Fifth was IRR technique. Sixth was profitability index or desirability factor technique. Seventh, modified version of IRR, modified IRR. MIRR भी इसको बोलते हैं. So these were 7 different techniques that we learned under this chapter. And ये techniques का ultimate मकसद क्या था? To help you in deciding whether you should go
for the project or not. This was the ultimate simple objective of all these techniques. All these techniques have their own individual decision making criteria, decision making rule. Okay? Correct. Yes, Pooja, correct. See, reciprocal payback period is not a technique, I would say. It is just a new, or you can say a concept derived from payback period. A complementary concept derived from payback period. Okay? So let's just quickly revise these 7 different techniques. Let's start with one of the simplest, payback period. Now, what was payback period? What does payback period mean? Time within which you recover your original investment. मतलब आप जो प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे ना, वो कितने साल में, कितने टाइम में रिकवर होगा, दैट वाज ऑल अबाउट पेबैक पीरियड. ठीक है? टाइम विद इन विच you recover your original investment. Let's say you are planning to take a new project जिसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा 10 लाख का. Every year cash inflows from that project are expected to be 2,50,000. तो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, एवरी ईयर कैश इनफ्लो जनरेट होने वाला है 2,50,000. तो कहना है से पे बैक पीरियड इज 4 years. आपको 4 साल लगेगा टू रिकवर योर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट. दिस 4 years इज नथिंग बट योर पे बैक पीरियड. ठीक है? टाइम विद इन विच यू रिकवर योर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट. वर्किंग कैपिटल is all working capital always get recovers at the end of the life. Now इसमें भी हमने there were 2 situations under payback period. Number 1, when cash inflows per annum are constant. And number 2, when cash inflows per annum are not constant, they are not uniform for each year, are not constant or not uniform. So there are 2 different scenarios under payback period. जब cash inflows per annum means every year आप जो कमाने वाले हो प्रोजेक्ट से, जो cash inflow generate करने वाले हो, वो same है for all year. Like in my current example, 10 lakh का investment, 2,50,000 is expected cash inflow each year. So can I say this is an example of scenario A? Cash inflows per annum are constant. So whenever cash inflows per annum are uniform, there is a direct formula to find payback period. हमारा 4 years आया था. 4 years कैसे आया? Original investment amount divided by cash inflows per annum. ठीक है? So whenever there is scenario A, uniform cash inflows, you directly use the formula to find payback period, which is nothing but original investment or initial investment divided by annual cash inflows. Divided by annual cash inflows. ठीक है? But this formula can only be utilized or can only be used when there are uniform cash inflows. For scenario B, you cannot apply this formula. Let's say scenario B is 10 lakh का original investment, year 1 में 3 lakh cash inflow, year 2 में 5 lakh, year 3 में 2.5 lakh, year 4 में 4 lakh, year 5 में 6 lakh, year 7 में 4 lakh. So the cash inflows per annum in this case, they are not uniform. So you cannot apply this formula straightforward. You will not get correct answer. So उस केस में हम क्या करते थे? How do we find payback period? For scenario B, does anyone recollect कैसे find करते थे? We used to follow 2 simple steps. Step 1, prepare column for cumulative cash inflows. This was step 1. Step 2, apply interpolation technique. ठीक है? These were the 2 simple steps to calculate payback period when cash inflows are not uniform.
just a brief recap with some numbers. Original investment 10 lakh. Cash inflows per annum are as follows. Year 1, 4 lakh. Year 2, 3 lakh. Year 3, 2.5 lakh. Year 4, 5 lakh. Year 5, 4.5 lakh. So in this case, the cash inflows per annum are not constant. तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. क्या करेंगे? वी विल फॉलो टू स्टेप. स्टेप 1, प्रिपेयर क्यूम्युलेटिव कैश इनफ्लो कॉलम. ठीक है. सो यहाँ पे ईयर 1, 2, 3, 4, 5. कैश इनफ्लोस इज 4 lakh, 3 lakh, 2.5 lakh, 5 lakh and 4.5 lakh. Step 1, prepare cumulative cash inflows. Cumulative means you just keep on adding for each year. So for year 2, cumulative cash inflow would be 7 lakh. For year 3, it would be 9.5 lakh. For year 4, 14.5 lakh. And for year 5, total cumulative cash inflow would be 19 lakh. Correct? So now you trace the year where your original investment would get recovered. Can I say you want to recover 10 lakhs? So your original investment would lie somewhere between year 3 and 4. Yes or no? 10 lakh यहाँ कहीं recover होगा between year 3 and 4. So can I say your payback period is 3 plus something? 3 years तो है, because 3 years में सिर्फ 9.5 लाख रिकवर की है. So it is 3 plus something. This is freezed now. 3 plus something is freezed. Now, how to find that something? So we use the technique of interpolation. Between year 3 and 4, हमने पूरे एक साल में कितना कैश इनफ्लो जनरेट किया between year 3 and 4? Can I say year 3 के अंत पे we were at 9.5 lakh. बट ईयर 4 के अंत पे हम पहुंच गए 14.5 लाख पे, 14.5 lakh. So in the entire span of 1 year, we were able to recover 5 lakh rupees. Are you following? Between year 3 and 4. बट क्या ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के लिए हमें 5 लाख की जरूरत है? इट इज जस्ट सफिशियंट इफ वी रिकवर एडिशनल 50,000. आर यू फॉलोइंग स्टूडेंट्स? हमें 5 लाख रिकवर करने की जरूरत नहीं है. 9.5 लाख तो ऑलरेडी रिकवर हो गए. अब सिर्फ एडिशनल 50,000 रिकवर करने हैं. सो 50,000 रिकवर करने के लिए हाउ मच एडिशनल टाइम विल बी नीडेड? दिस इज इंटरपोलेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. आर यू फॉलोइंग स्टूडेंट्स? So can I say it is nothing but 1 into 0.5 divided by 5. So 0.5 divided by 5 comes to 0.5 divided by 5. 0.1 years. So my payback period is 3 plus 0.1, 3.1 years. Are you able to recollect payback period when cash inflows are not uniform? Bolo, any doubts, any queries? If you have any doubts, you can put your comments in the chat box, and if you don't have, I will move forward. Okay? So this was payback period. But is payback period technique ka? There are some disadvantages. What are the disadvantages? Disadvantage number 1, very important. It ignores time value of money. Yeah. If you see properly, we have not discounted any of the cash inflows. We have taken the cash inflows in its absolute terms. We have not discounted. Means, not discounted means what, you know? 5 साल बाद जो हमें 4.5 lakh cash inflow मिलने वाला है ना, it is worth 4.5 lakh today. This is what it means if you don't discount the cash inflows. So 5 साल के बाद आपको 4.5 lakh मिलने वाला, it is worth 4.5 lakh today also. So it is little impractical
Correct? So this technique ignores time value of money. Number one. Number two, ignores all the cash inflows that are generated after payback period. Did you get what I'm trying to say? हमारा payback period was 3.1 years, correct? तो अब year 6 में 10 लाख भी होने दो, year 7 में 20 लाख भी होने दो. Payback period ignores this cash inflows. He says मेरे को कुछ लेना देना नहीं है after the payback period. Are you following? So even major cash inflows, substantial cash inflows are generated after payback period. This technique ignores that. So, okay? Are you following? Everyone, any doubts, any queries? So these are the two biggest disadvantage of this technique. Ignores time value of money, ignores all the inflows that are generated after the payback period. Understood? So, in a very logical or rational terms, if I ask you, कि ideal payback period आपका क्या होना चाहिए? Should it be less than your life? It should obviously less than your life of the project. Are you following? So if payback period is less than your life of the project, you accept the project. This is a decision making criteria for this tech. अच्छा, life 5 years है and you are not able to recover original investment within 5 years. Can I say you should reject your project? 5 साल की तो प्रोजेक्ट की लाइफ है, बट 5 साल में आप रिकवर भी नहीं कर पा रहे हो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट. कमाई तो छोड़ो, प्रॉफिट तो छोड़ो, यू आर नॉट एबल टू रिकवर योर ओरिजिनल कॉस्ट एज वेल. सो कैन आई से यू शुड reject the project. So this is a decision making criteria rule for payback period. So number one technique done, simple. Number two technique, discounted payback period. In this technique, or I would say discounted payback period technique, has resolved one of the disadvantage of payback period. Discounted payback period technique considers time value of money. Are you following everyone? So payback period and discounted payback period के बीच का अंतर एक ही है. Payback period में हम cash inflows को discount नहीं करते थे. Discounted payback period में हम discount करेंगे. We will give the effect of time value of money. We will implement the time value of money concept. Understood everyone? So this is the only difference between payback period and discounted payback period. So यहाँ पे instead of 3 columns, अब 4 column आएगा. Column number 3 would be discounting present value of cash inflow. So 4 lakh को हम discounted value ढूंढेंगे, 3 lakh की हम discounted value ढूंढेंगे. Likewise for 2.5 lakh, 5 lakh, 4.5 lakh. We would find the discounted value of each cash inflows, and then we would prepare a column of accumulation of present value of cash inflows. Hey, are you able to process what I'm trying to say? समझ रहे हो क्या करना है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड टेक्निक में? Yes. So we take cumulation of PVCI, not just CI, PVCI. And then you follow the 2 steps. Locate where your original investment is getting recovered. Locate that. And then after locating that, you interpolate. Understanding? So discounted payback period technique. Number 2. It considers time value of money concept. ठीक है? So यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है? Number 1, you calculate present value of cash inflows. Number 2, then prepare column of cumulative PVCI, not just cash inflows, but cumulative present value of cash inflows. Then
locate where your original investment gets recovered. Trace that years. Trace the period where your original investment gets recovered. And number 4, apply interpolation technique between those years, between those period. ठीक है? Interpolation technique to be applied. Okay, now my question to you, think and answer. Will payback period be greater than discounted payback period, or discounted payback period will always be greater than payback period? बोलो क्या होगा? पेबैक पीरियड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड से ज्यादा होगा, या डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड हमेशा पेबैक पीरियड से ज्यादा होगा? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज योर ओपिनियन? क्या लग रहा है? सोचो. Discounted payback period. Discounted. Kuldeep, discounted payback period. Pooja, discounted. Okay, correct. Everyone is correct. Why? Discounted payback period में कहना है हम कैश इनफ्लोस की वैल्यू कम कर रहे हैं. कैश इनफ्लोस की वैल्यू कम कर रहे हैं मीन्स ज्यादा टाइम लगेगा फॉर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट टू गेट रिकवर्ड. ठीक है? So that is the logic why discounted payback period will always be higher than payback period. ठीक है? Discounted payback period always be higher than normal payback period or simple payback period. Normal payback period को हम simple payback period technique बोलते हैं. Okay. Now next we learned ARR, accounting rate of return. Means this is the only technique where cash inflows को हम importance नहीं देंगे but accounting profit को ज्यादा importance देंगे. Why? Because they are asking, see, as the name suggests, accounting rate of return means calculating ROI from accounting perspective, from accounting principles. Are you following? Accounting rate of return is nothing but simply calculating ROI based on accounting profit. So accounting profit में कहना है we don't give importance to cash inflows. Accounting standards, accounting principles gives more weightage to accounting profit. Sales हो गया but उसका पैसा नहीं आया तो accountant को उससे कोई लेना देना नहीं है. Are you following? He will just record the sales, profit बढ़ गया but उसका पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, he is not concerned with that. FM guy is concerned with that. Are you following? Accounting में accounting perspective, accounting principle says if sales is done, record the revenue. ठीक है? So the formula for ARR was instead of cash inflows, we used to take average net profit after tax. This is the only technique where we give importance to accounting profit. बाकी सारे जो भी टेक्निक है वी गिव इंपॉर्टेंस टू कैश इनफ्लोस. एफएम में फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी, फाइनेंस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस. आर यू फॉलोइंग? सो द फॉर्मूला वाज एवरेज एनपीएटी upon original investment into 100. Why? Because we need to find the rate of return. ठीक है? और there was one more formula. Since you are taking average in the numerator, you take average in the denominator as well. And what is average investment? It is nothing but initial investment plus closing investment divided by 2. Understood? This was ARR, average rate of return. ARR technique. This is the only technique which gives importance to profit rather than cash flows. Followed everyone? अच्छा, मेन चीज हाउ टू सी. यहाँ पे हम सब इन दिस चैप्टर वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू कैश इनफ्लोस, कैश आउटफ्लोस. हाउ टू कैलकुलेट दैट कैश इनफ्लोस? सो आर यू एबल टू रिकलेक्ट? उसके लिए हमने एक इनकम स्टेटमेंट बनाया था. इनकम स्टेटमेंट वाज स्टार्टिंग विद सेल्स. सर
हाँ बोलिए। सर ये जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है इसमें एक बार स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 7.24 में मेरे को कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। See that confuse that formula is nothing but opening investment plus closing investment divide by 2। आप ये सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना तो आंसर वही आएगा। बट सर ओपनिंग इसमें ना इन्वेस्टमेंट इनिशियल ओपनिंग मीन्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट मीन्स समटाइम्स स्क्रैप बचता है, दैट इज क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। डिवाइड बाय 2 करोगे तो वही आंसर आएगा। सो द सर लॉजिक इज दैट। सर लेकिन इसमें ना ये लिखा हुआ है 1/2 इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस साल्वेज वैल्यू, फिर बाद हाँ में प्लस साल्वेज वैल्यू लिखा हुआ है। हाँ समझ गया, बट वो फॉर्मूला अप्लाई करो या मैंने जो फॉर्मूला दी वो अप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। सी, इफ यू वांट टू कैलकुलेट 10 तो इट इज 5 प्लस 5 भी 10 होता है, 20 माइनस 10 भी 10 होता है, 15 माइनस 5 भी 10 होता है। आंसर इन ऑल द केसेस विल रिमेन सेम। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। यू कैन नॉट से 5 प्लस 5 इज अ रॉन्ग मेथड, नाइदर यू कैन से 20 माइनस 10 इज अ रॉन्ग मेथड, नाइदर यू कैन से 15 माइनस 5 इज अ रॉन्ग मेथड। हाँ, एट द एंड यू आर गेटिंग योर डिजायर्ड आंसर। आर यू फॉलोइंग? सो फॉर्मूला जो है ना उसका लॉजिक यही है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। लेकिन सर इसमें ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट पहले माइनस सैलवेज वैल्यू देन प्लस सैलवेज वैल्यू, तो वो तो नील ही हो जाएगा सर, देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2 ही हो जाएगा नील नहीं ये। होगा, आई विल कम टू दैट पॉइंट। वो नील नहीं होगा, यही आंसर आएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। आई विल शो यू दैट इवन इन वन ऑफ द आरटीपी क्वेश्चंस। इफ यू हैव सीन आरटीपी क्वेश्चन और एमटीपी क्वेश्चन, उन्होंने दो तरह से सॉल्व किया, वन बाय द फॉर्मूला दैट यू आर सेइंग राइट नाउ एंड वन बाय द फॉर्मूला दैट आई हैव गिवन। दोनों में आंसर सेम ही आता है। सो डोंट वरी इन दैट यू आर ट्राइंग टू मेमोराइज द फॉर्मूला। डोंट मेमोराइज द फॉर्मूला, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। एवरेज इन्वेस्टमेंट मीन्स क्या? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। आंसर दोनों में सेम आएगा। डोंट वरी इन दैट, आई विल शो यू दैट at the end of the session. You are तो सर trying to memorize the formula, but I सर will show इसमें you. ओके सर हाँ बाद में ठीक है, सर एट द इसमें एंड ऑफ द सेशन आई विल शो यू ओके सर सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक सर। फॉर्मेट इज सेल्स, फिर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, यू गेट कंट्रीब्यूशन, you subtract fixed cost excluding depreciation, so you subtract the cash fixed cost, you get NPBDT, net profit before depreciation and tax। फिर इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, सो वी गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं, सो यू गेट NPAT। फिर वी एड बैक द डेप्रिसिएशन एंड वी गेट कैश इनफ्लोस, और कैश इनफ्लोस आफ्टर टैक्स, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। अच्छा, व्हाट इज द रीजन और लॉजिक टू सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन फर्स्ट एंड एड बैक एट द लेटर पॉइंट? माइनस करके ऐड ही करना था, तो क्यों माइनस की और क्यों ऐड किया? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? कैन एनीवन राइट इन द चैट बॉक्स? फॉर टैक्स, यस। See, ideally in this chapter we are concerned with cash flows. So जो expenses cash में pay होगा either today or in future, we need to consider only those expenses. So can I say depreciation being a non-cash expense should ideally be ignored in this chapter, because depreciation का amount हमारे जेब से नहीं जाता है, correct? So depreciation in itself is not relevant in this chapter, बट डेप्रिसिएशन के वजह से कुछ टैक्स की बचत होगी। वाई? बिकॉज इट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। सो डेप्रिसिएशन है तो कुछ टैक्स सेविंग्स होगा, एंड दैट टैक्स सेविंग्स इज रेलेवेंट कैश फ्लोज इन दिस चैप्टर। सो दैट्स वाई only to calculate tax savings on depreciation, we consider depreciation first and then add back later. Are you following, everyone? So to find the correct amount of tax,
To find the correct amount of tax to be paid, we first subtract the depreciation. Once the correct amount of tax is calculated, depreciation का वहां काम समाप्त हो जाता है. And then we throw it away. We throw the depreciation away from our statement. Understood? Correct. So this is the format that we have learned in this chapter. So always stick to the format. इधर उधर मत करना. Sometimes in the question they directly give you cash inflows. Sometimes they may say profit after tax in so and so. So आपका starting point है NPAT. So you need to know which is our starting point. Sometimes profit before depreciation and tax बोला होता है. So your starting point is NPBDT. Correct? So you need to catch from where the statement will commence. Understood? So this was all about statement, and we also quickly revised ARR. Yeah, tax free status है 6.5%. So obviously you will take 6.5 whether it is pre-tax, post-tax, tax-free status है. So before tax low या after tax low, the rate would be same. And in that case, can I say depreciation कोई बचत करके नहीं देगा because there is no tax. So depreciation would be irrelevant in that case. Moving forward to fourth technique, NPV technique. NPV technique, very important, highly used in practical world to decide whether to invest in the project or not. The formula to calculate NPV was simple: PVCI minus PVCO. Present value of cash inflows minus present value of cash outflows. Bring all the future calculation in today's terms, in today's point, in present value terms. Are you following? Because 5 साल बाद, 10 साल बाद जो आप कमाने वाले हो, जो आप कैश इनफ्लोस जनरेट करने वाले हो, would not be same today. So bring all the expected future calculations at today's point. सारा आज के वैल्यू पे लेके आओ and see whether आज के टर्म्स में are you earning more inflows than outflow? If yes, you accept the project. If no, you reject the project. So the decision making criteria for NPV technique was, if NPV is positive, you accept the project. And if NPV is negative, you reject the project. सारे फ्यूचर कैलकुलेशंस आज के तारीख पे, आज के वैल्यू पे लेके आओ एंड सी आज के वैल्यू पे इज योर इनफ्लो मोर देन आउटफ्लो. इफ यस, गो फॉर द प्रोजेक्ट. If no, don't go for the project, reject the project. So this was NPV technique. However, to find cash inflows, there were some special adjustments. I don't know if you recollect or not, but I have explained these special adjustments in my live normal classes, regular classes. What were those special adjustments to be considered for cash inflows? Special adjustments to be considered. Special adjustment number 1 was about sunk cost. What is to be done for the sunk cost? हम क्या करते थे हमारे कैश फ्लोज में? हम इसको लेते थे कि इग्नोर करते थे? What is sunk cost? What to do with the sunk cost? Can anyone tell me? Ignore. Why to be ignored? What is the logic? Sunk cost means डूबा हुआ cost. आप प्रोजेक्ट लेते हो या नहीं लेते हो, this cost is already incurred.
ये कॉस्ट आपके जेब से चला जा रहा है और चला गया है रेदर, सो इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर आर डिसीजन मेकिंग. आर यू फॉलोइंग? Not relevant for our decision making. So that's why we ignore the sunk cost. Like research, प्रोजेक्ट लेने से पहले उस वो प्रोजेक्ट की पूरी इन एंड आउट रिसर्च होती है. अब रिसर्च के अनुसार ये पता चला प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए, तो कहना है रिसर्च कॉस्ट प्रोजेक्ट ले या ना ले, हमें रिसर्च कॉस्ट तो बेयर करना ही पड़ेगा, बेयर किया ही होगा. सो दैट इज अ सम कॉस्ट वेदर यू टेक द प्रोजेक्ट और वेदर यू डोंट टेक द प्रोजेक्ट. दिस कॉस्ट इज ऑलरेडी संक, ये डूब गया है. अंडरस्टूड? सो यू इग्नोर संक कॉस्ट. नंबर 2, non-cash expenses like depreciation and amortization. बोलो relevant की irrelevant? Non-cash expenses, are they relevant की irrelevant? Yes, that's the correct R&D. Number 2, special adjustment, non-cash expense, depreciation है, amortization है. So non-cash expense in itself it is irrelevant. In itself it is irrelevant. By its nature it is irrelevant. ठीक है? Not relevant. हाँ, but tax savings due to non-cash expense is relevant. Tax savings, or you can say tax shield due to non-cash expense, to that extent it is relevant. Are you following? So depreciation by its nature of wear and tear, it is non-relevant because जेब से पैसे नहीं जा रहे, कैश नहीं जा रहा है. बट उसके वजह से टैक्स शील्ड, टैक्स सेविंग्स जो हो रहा है, दैट इज रेलेवेंट. टू दैट एक्सटेंट इट इज रेलेवेंट. अंडरस्टूड? सो दिस वाज स्पेशल एडजस्टमेंट नंबर 2, हाउ टू डील विथ नॉन कैश एक्सपेंस. नंबर 3 was working capital. So along with initial investment or to start any new project, you also need working capital. जैसे लेट से हमारा प्रोजेक्ट है टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए हमने फैक्ट्री के लिए जगह ले ली. वो उस फैक्ट्री के लैंड पे हमने फैक्ट्री बिल्डिंग तैयार कर दी. फिर फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर सारे मशीनरीज लगा दी. फैक्ट्री चलाने के लिए ऑफिस सेटअप भी अंदर कर दिया. बट कहने से सिर्फ इतना करने से आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट नहीं हो जाएगा. ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उस मशीन में रॉ मटेरियल्स तो डालना पड़ेगा, उस मशीन में कुछ लेबर्स लगाने पड़ेंगे हु विल वर्क ऑन दैट मशीनरी. सो दैट एडिशनल फंड्स you need for day to day operations and that is working capital. So कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है ना, सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट या सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट पे पैसा लगा दिया इज नॉट सफिशिएंट. यू नीड एडिशनल कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल. ठीक है? सो वर्किंग कैपिटल स्पेशल एडजस्टमेंट में हम क्या करते थे? इट वॉज ट्रीटेड एज आउटफ्लो एट ईयर 0. means at the start of the project it was considered as outflow. Why? Because हमारे जेब से working capital जाएगा. But once the project is ended, can I say वो working capital release हो जाएगा? Release means inflow. So for example, working capital में मेरा डेटर्स में पैसा ब्लॉक होगा जो at the end of the project मुझे मिल जाएगा. So release of working capital is treated as an inflow. बट ये रिलीज कब होगा? ये वर्किंग कैपिटल रिलीज कब होगा? या रिलीज मींस ये वर्किंग कैपिटल नील कब होगा? प्रोजेक्ट के अंत पे. ठीक है? एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ. Yeah, if not written, then it is always presumed that it will get released at the end of the life. ठीक है? And if not written, it is always presumed that it is invested at the start of the life. So this was all about special adjustment of working capital. इसके अलावा कोई हमारा स्पेशल एडजस्टमेंट होता था?
Yes, opportunity cost. Correct. Rightly said, opportunity cost. So opportunity cost, again, from accounting perspective, it is irrelevant. Accounting perspective से irrelevant. But in financial perspective, from investment decision perspective, it is always relevant. Opportunity cost माने, if you recollect, I have given an example. कि लेट्स से मुझे नया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ही स्टार्ट करना है. जस्ट कंटिन्यूइंग विद द सेम एग्जांपल, आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. तो उसके लिए मुझे जगह चाहिए. सो आई मीन्स कंपनी, माय कंपनी ऑलरेडी हैज एन एग्जिस्टिंग बैरन लैंड, बट फिलहाल मैंने फार्मिंग के लिए उसको रेंट पे दी हुई है. आर यू विजुअलाइजिंग द एग्जांपल? आई नीड a land to set up a manufacturing plant. So my company already owns one land, which is given currently on rent for farming purpose. तो कहना है से अभी फिलहाल उस लैंड में से मुझे फार्मिंग इनकम जनरेट हो रही है. करेक्ट. बट नाउ आई एम थिंकिंग टू यूटिलाइज दैट लैंड फॉर सेटिंग अप द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. मैं क्यों नई जगह लूं? मेरे खुद के पास sufficient space है. Then let me set up in my own land. Are you following? So can I say अब if I'm planning to set up a manufacturing plant, मेरी ये income बंद हो जाएगी. Now I will not be able to earn farming income. So this is losing an opportunity of earning income from somewhere else. So this is relevant for our डिसीजन मेकिंग. बोलो इसको हम आउटफ्लो में गिनेंगे या इनफ्लो में गिनेंगे? व्हाट डू यू थिंक? लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न फार्मिंग इनकम. माय प्रोजेक्ट इज टू सेट अप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. फॉर दैट सेटिंग अप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, आई हैव टू लूज दिस फार्मिंग इनकम नाउ. आई हैव टू बी रेडी कि मुझे अब फार्मिंग इनकम जनरेट नहीं होगी. बोलो, will this be considered as relevant for cash inflow? Yes, it is relevant for our decision making. But inflow में गिना जाएगा या outflow में? Outflow, yes. Opportunity cost. Losing an opportunity to earn income is always considered as an outflow. Understood? So opportunity cost is also a special adjustment, and you very much know how to deal with it. It will be considered as relevant for decision making, and it will be considered as an outflow. Likewise, there would be some savings in cost as well. Again, savings in cost has no place in accounting principles or from accounting perspective, but FM में उसका relevance, उसका importance है. Savings in cost. Again, continuing with the same example, but in some unified version or in some थोड़ा twist करके, let's say मेरा manufacturing industry अभी proper चल रहा है, but it was labor based, manually based. So जो भी production होता था वो laborers करते थे, manually करते थे. But now due to advancement in technology, वो labor की अब मुझे जरूरत नहीं है. That labors can be replaced by machines. Are you visualizing the example? So can I say there would be some savings in labor wages? बोलो, relevant की irrelevant for my decision making? Tell me, relevant की irrelevant? Obviously sir, it is relevant because project के लेने से, नए प्रोजेक्ट के लेने से अब लेबर का कॉस्ट आपका सेव हो जाएगा. So it is obviously relevant. And since this is savings in cost, it will be treated just like your other inflows. ठीक है? So the concept is opportunity cost or savings in cost. Both are relevant. Opportunity cost, losing an opportunity to earn, that will be treated as an outflow. Savings in cost, inflow. Addition in cost, that will be treated as normal outflow. Okay? So these were some special adjustments that we learned in this chapter. Now moving to next technique, NPV के साथ जुड़ा है
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। दोनों में वेरिएबल सेम ही है। एनपीवी में भी यू नीड टू फाइंड पीवीसीआई एंड पीवीसीओ, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में भी यू नीड टू फाइंड पीवीसीआई पीवीसीओ। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला इज पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ। ठीक है। डिसीजन मेकिंग रूल वाज इफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 you accept the project, and if profitability index is less than 1 you reject the project. Acha, let's say my present value of cash inflow for the time being, let's say it comes to 3.5 lakh and my PVCO is 1 lakh, a random example. So can I say it is nothing but rupees 3.5 is to 1? How to interpret this 3.5 is to 1? हाँ, आंसर आ गया, it is greater than 1 we will accept the project. But how to interpret this answer logically? So logically this is interpreted as, for every 1 rupee of outflow my company is generating 3 rupees of inflows in present value terms. आज के terms में it is generating 3.5 rupees. मतलब 1 रुपया लगाया, you are earning 3.5 rupees in present value terms. So obviously rationally you will accept, as a rational person, as a rational investor, you will accept the project. Inflow is favorable by 3.5 times, yes. But a rational explanation or a very layman explanation is 1 रुपया लगाने पे 3.5 रुपए का इनफ्लो जनरेट हो रहा है इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स, इन टूडेज टर्म्स, नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म्स। आर यू फॉलोइंग? सो 1 रुपया लगाया, ज्यादा इनफ्लो मिल रहा है, गो फॉर द प्रोजेक्ट। दिस वॉज द डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया फॉर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अंडरस्टूड? क्लियर? टेक्निक नंबर 6 was important, again important, IRR technique. Full form क्या था? Internal rate of return. Rate of return. Focus on the wordings of this technique, rate of return. So under this technique we used to find the discounting rate. हम क्या फाइंड करते थे? डिस्काउंटिंग रेट। कोई अमाउंट फाइंड नहीं करते थे, डिस्काउंटिंग रेट फाइंड करते थे। एंड दैट डिस्काउंटिंग रेट वेर योर present value of inflow comes to equal to present value of outflow. So IRR is that discounting rate. कौन से discounting rate पे आपका PVCI equals to PVCO? That is IRR, internal rate of return, or you can say actual rate of return from the project. At what rate your PVCI comes equal to PVCO? In other words, can I say PVCI minus PVCO comes to 0? IRR is that discounting rate where PVCI minus PVCO comes to 0. Or in other words, I can say it is that discounting rate where NPV comes to 0. PVCO को मैं LHS लेफ्ट हैंड साइड लेके गया तो बना PVCI minus PVCO is equal to 0. PVCI minus PVCO is nothing but NPV. So it is that discounting rate where your NPV comes to 0. Are you following? Maximum capacity of the project to earn, maximum earning capacity of the project, that is IRR. ठीक है? So इसका decision making criteria was, if IRR is greater than your weighted average cost of capital, accept the project. If IRR is less than your WACC, reject the project. So as a layman, you should understand, if you are able to earn more than your cost, you will accept the project. But if you are able to earn, if you are not able to recover your cost, obviously you will reject the project. Are you following? Because in long term, if you are not able to recover your cost of capital, you will go in financial distress. Understood? So this was decision making criteria for calculating IRR. अच्छा,
सो IRR का मतलब आपको समझ गया. इट वॉज टू फाइंड द डिस्काउंटिंग रेट वेर PVCI equates PVCO, or in other words, where NPV comes to zero. But how to find IRR? Calculate कैसे करते थे? Can anyone suggest in the chat box what were the steps that we followed to calculate IRR? Let me see if you are able to recollect or not. Trial and error. Perfect. Pooja rightly answered by trial and error. So to calculate IRR, we used to follow trial and error method. Trial and error method में हम trial one, let's say for example, we were checking कि क्या 10% discounting rate पे PVCI equals to PVCO, ये हम चेक करते थे. If yes, then your IRR is 10%. But if no, then your IRR cannot be 10%. It has to be something above or below. Are you following? So फिर हम trial 2 पे जाते थे. Let's say at 13%. Is your PVCI equal to PVCO at 13%? हम check करते थे. No, then 13% cannot be your IRR. But let's say at 10% NPV, let's say at 10% NPV comes to 2,500 positive, and at 13% discounting rate, NPV comes to negative 2,000. ठीक है? So 10 and 13 cannot be my IRR. But can I say NPV of 0 would lie between these two rates? This is positive NPV, 2,500. This is negative 2000 NPV. But can I say NPV of 0 would lie between 10 and 13%? Yes or no? So my IRR is 10 plus something. This is freezed. Are you following? Are you able to recollect हम कैसे calculate करते थे IRR? We used to use trial and error method. Different trials पे हम NPV ढूंढते थे, फिर ट्रेस करते थे कि NPV 0 कहाँ लोकेट हो रहा है. So it is getting traced or located between 10 and 13%. So 10 plus something is freezed. Step 2, again interpolation. Interpolation में क्या करते थे? Can you see if we increased the IRR or the discounting rate, not IRR but discounting rate by 3%, मेरा NPV देखो फॉल हो गया. मैंने रेट 3% से बढ़ाया तो मेरा एनपीवी कम हो गया. कितने से कम हुआ? कहना इसे पहले 2,500 से 0, तो 2,500 फॉल हुआ, एंड 0 से और नेगेटिव 2,000. सो कहना इसे इट फेल बाय 4,500. कोई भी 500 नहीं बोलेगा. 500 इज एब्सर्ड. वाई? बिकॉज पॉजिटिव 2,500 से 0 पे फॉल होगा, मीन्स 2,500 गिरेगा, और 0 से नेगेटिव 2,000 जा रहा है. सो इट फेल बाय 4,500. सो बाय इंक्रीजिंग the rate by 3%, NPV fell by 4,500. बट मुझे 4,500 से नहीं गिराना है, मुझे सिर्फ 2,500 से गिराना है. आर यू फॉलोइंग? 4,500 से गिरा होगा तो रेट मुझे 3% बढ़ाना होगा. बट मुझे आई डोंट वांट टू my NPV to fall by 4,500. I just want if it fails by 2,500, I will reach to my destination. Are you following? So IRR, sorry, discounting rate कितने से बढ़ाना होगा? So can I say it will be 3 into 2,500 divided by 4,500. So 7,500 divided by 4,500. So it comes to 1.66%. See, आपको 1.66 से बढ़ाना होगा. So when I say therefore my IRR will be 10 plus 1.66, which comes to 11.66%. Understood? So this was the whole logic to calculate IRR by interpolation, by trial and error.
क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स? अच्छा, जिसको ये इंटरपोलेशन या जिसको ये टाइमलाइन चार्ट वाला लॉजिक नहीं समझा, उसके लिए इंस्टीट्यूट हैज गिवन वन फॉर्मूला आल्सो. What was the formula to calculate IRR? It is nothing but lower rate plus NPV at lower rate, the whole upon NPV at lower rate minus NPV at higher rate. And this we used to multiply it with higher rate minus lower rate. ठीक है? ये पूरा लॉजिक, this entire interpolation logic was devised into formula for easy calculation. But I feel formula says easy तो logic है interpolation का. Yes, correct. कुलदीप, correct. Formula is correct. बट फॉर्मूला डिराइव कैसे हुई है? तो ये इंटरपोलेशन लॉजिक से ही हुई है. ऑल दिस चार्ट का लॉजिक, ऑल दिस इंटरपोलेशन का लॉजिक. ठीक है? आईआरआर. आईआरआर के बाद लास्ट टेक्निक वाज मॉडिफाइड आईआरआर. yes, modified IRR. This was advanced version of IRR. आईआरआर का एक ड्रॉबैक क्या था? आईआरआर का ड्रॉबैक ये है कि जो भी हम इंटरमिटेंट कैश इनफ्लोस जनरेट करते हैं ना, मींस ईयर 1 का कैश फ्लो लेट से 1 लाख, 2 लाख, ईयर 2 का 2 लाख, ईयर 3 का 5 लाख, ईयर 4 का 4 लाख, ईयर 5 का 6 लाख. दिस ऑल आर कॉल्ड एज इंटरमिटेंट कैश फ्लोस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट्स लाइफ. सो आईआरआर इज अज्यूमिंग कि ये सारे कैश इनफ्लोस, सी विजुअलाइज फ्रॉम बिजनेसमैन पर्सपेक्टिव. मान लो आपने ईयर 1 में 1 लाख इनफ्लो जनरेट किया, वो आप अपने ड्रॉअर में एज इट इज नहीं रखोगे. आप क्या करोगे? यू विल री इन्वेस्ट दिस कैश इनफ्लो समवेयर एल्स, इन सम अदर प्रोजेक्ट, in some other product, in some other business. Correct? So can I say this intermittent, all these intermittent cash inflows would be reinvested as a rational investor or as a rational organization. So IRR presumes कि ये reinvestment होगा IRR rate पे. Let's say your IRR comes to 20%. तो ये सारे intermittent cash inflows are reinvested at 20%. This is what IRR presumes, and this is illogical. Why? Because every project would have different IRR. Understood? ये 20% तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का IRR आया. So you cannot assume कि 1 लाख कहीं और भी 20% पे इन्वेस्ट होगा. Are you following? हाँ, you can presume that this inflows will be reinvested at my overall cost of capital somewhere else, और दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा तो I will recover my overall cost of capital. This assumption you can take. Are you following? So that is what modified IRR presumes, that all the intermittent cash inflows will not be reinvested at IRR, rather it will be reinvested at some cost of capital rate at WACC. Are you following everyone? हाँ, कहीं और भी इन्वेस्ट करूंगा तो I would want my cost to recover. So it will be reinvested at WACC and not project specific IRR. This was the whole difference or the concept of modified IRR and IRR. ठीक है? So IRR was a discounting rate. IRR was a discounting rate where PVCI was equal to PVCO, correct? But MIRR is also a discounting rate. But which discounting rate? Not PVCI is equal to PVCO, but that discounting rate which equates your present value of terminal cash inflow with present value of cash outflow. Are you following? So the difference is IRR was that discounting rate जहाँ PVCI was equal to PVCO, but यहाँ पे PVCI will not be equal to PVCO. It is that discounting rate where your present value of terminal cash inflow is
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश आउट। अब ये टर्मिनल कैश इनफ्लो क्या होता था? कैन एनीवन से? कैन एनीवन टेल मी व्हाट वाज टर्मिनल कैश इनफ्लो? Terminal means reaching at the terminus, reaching at the final destination, reaching at the final station. So terminal cash inflow क्या होता था? Yes, Kuldeep, perfect. Reaching at the final point means at the end of project life. ठीक है? So we used to bring all the intermittent cash flows at the terminal point. सबको हम टर्मिनल पॉइंट पे लाते थे, एंड दैट वाज टर्म्ड एज टर्मिनल कैश इनफ्लोस। आर यू फॉलोइंग? सो अब मॉडिफाइड आईआरआर में अगर आप कैश इनफ्लोस का टेबल देखोगे, चार्ट देखोगे, तो ईयर 1 2 3 4 5, ईयर 1 0 0 0 0, all was accumulated, all was pooled to terminal point. Are you following, everyone? And the rate that equates present value of this terminal cash inflow with your present value of initial investment was modified IRR, advanced version of IRR. ठीक है? सो सारे इंटरमीडिएट कैश इनफ्लोस हम पूल करते थे, हम खींचते थे कौन से पॉइंट पे? फाइनल पॉइंट पे, मींस टर्मिनल पॉइंट पे, फाइनल अंतिम स्टेशन पे। आर यू फॉलोइंग? एंड देन बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड हम पहले टर्मिनल कैश इनफ्लोस को अगेन डिस्काउंट करते थे 10% पे, एंड चेक करते थे क्या टर्मिनल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू पीवीसीओ। नो, देन जंप टू सेकेंड रेट and then do interpolation. Are you able to recollect modified IRR, students? Any queries, any concerns? I'm just brushing up the concepts that you have learned in your regular classes. Okay, so this was modified IRR. Yeah, it is tricky, but if you follow the steps conceptually, it is easy. Okay, step क्या follow करना है? Step 1, bring the intermediate cash flows to terminal point, final point. ठीक है? Using the reinvestment rate of WACC. Step 2, trial and error method. Use trial and error for discounting rates. Step 3, do interpolation. 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा. So this was modified IRR. Now there were some other scenarios, some other concepts that we learned in this chapter. Other scenarios was, if you recollect, there are different situations where NPV technique and IRR technique would give conflicting results. I don't know if you are recollecting or not. But just to summarize, let's say there are two projects, project A, project B, NPV, IRR. ठीक है? Project NPV टेक्निक के हिसाब से project A is better, but from IRR technique perspective, project B was coming better. So ऐसे कौन से situations में, under which scenarios IRR and NPV will be giving conflicting results, ये भी हमने सीखा था. तो can anyone tell me what are the different? There were 3 scenarios. Let me give you hint. There are 3 different situations जहां पे दोनों टेक्निक conflicting result देगा. If you want to select and based on NPV technique, project A would be best. But if you want to select based on IRR technique, project B would be best. So ऐसे कौन से 3 सिनेरियोस थे? Perfect. You have revised it perfectly. Good, good. It was due to, situation 1 was due to difference in size of the product. Due to difference in size of the product, projects. So something like this. Let me say project A costing is around 2 lakh rupees. Project B
cost somewhere around 20 lakh. So can you see a humongous difference in the size of the project? So ऐसा कोई scenario है, then your answer between NPV and IRR would be conflicting. ठीक है? So this was scenario 1. Scenario 2 was timing difference. Timing difference in cash inflows. Size difference नहीं, timing difference in generation of cash inflows. So let's say again, project A, project B. Now both are of the same size. Let's say both the project cost 10 lakh. But now if you see the pattern for project A and B, it looks something like this. 50,000, 75,000, 4 lakh, 12 lakh. This is the pattern of cash inflows for project A. And if you see the pattern of cash inflows for project B, it is something like this. 7 lakh, 6 lakh, 20,000, 80,000. So can you see project A is generating major cash inflows at later stage of its life. ठीक है, वो ज्यादा कब कमाई कर रहा है? प्रोजेक्ट लाइफ के अंत पे. And whereas project B is earning more cash inflows at the beginning of its life. So can I say there is timing difference between the cash inflows generation? So ऐसा कोई situation है, then again both the projects would give conflicting results. इसके illustrations भी मॉड्यूल में दिए हुए हैं. ठीक है. And last but not the least, difference in life of the project. So project की life, दोनों project की life is different. Project A life is, let's say, 3 years. Project B life is 6 years. ठीक है. So ऐसा कोई situation है when the life of the project is different for two projects. Again, IRR and NPV would be giving conflicting answers. हुआ recollect? कुछ याद आ रहा है? Okay. So capital budgeting chapter says जब scenario 3 है, when life of the project is different, this can be resolved. This can be resolved. How will it be resolved? So they have given two different methods. One is use replacement chain method to bring the life at equal point, or you use annualized equivalent criteria. ठीक है. So ideally, normally, when life of the project is different, you cannot compare. एक 3 साल के बच्चे को आप 20 साल के बच्चे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. Both have different mindsets, both have different ideologies, both have different preferences. So ideally 3 साल के बच्चे को कंपेयर नहीं कर सकते with 20 years बच्चा. ठीक है. और टीनेजर. But here, if you want to make it comparable, if you want to make a decision कि कौन से प्रोजेक्ट पे जाए, so first you need to bring at a comparable point. Means ideally, when the life of two project is different, you cannot outrightly decide which project is better. Direct decision आप नहीं ले सकते. ठीक है. You need to first bring them at comparable point. Means वो दोनों की लाइफ को आपको इक्वल करना पड़ेगा, at some comparable point पे लाना पड़ेगा, and then you can decide which project is better. So now how to bring the life of the project at comparable point? So we have two different methods, replacement chain method and annualized equivalent criteria. ठीक है. रिप्लेसमेंट चेन मेथड में हम क्या करते थे?
Let's say project A is 3 years. So you take entire project one more time. तो तब जाके प्रोजेक्ट ए भी 6 साल का हो जाएगा एंड प्रोजेक्ट बी 6 साल का ऑलरेडी है. दिस वॉज रिप्लेसमेंट चेन मेथड. When life is unequal, outright decision making would be not proper. You have to first bring both the projects at comparable point. To bring both the projects at comparable point, you have two methods: replacement chain, annualized criteria. रिप्लेसमेंट चेन में क्या करने का? प्रोजेक्ट इज 3 years, तो पूरा प्रोजेक्ट और एक बार ले लो. टेक प्रोजेक्ट ए 2 times, so कहने से लाइफ 6 years हो जाएगा. एंड नाउ यू कैन कंपेयर विथ प्रोजेक्ट बी. ठीक है. बट देयर वाज वन लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड. लिमिटेशन क्या था? सी यहाँ पे तो अभी लाइफ सिंपल है, 3 years 6 years. मान लो लाइफ कुछ इस तरह होती, 11 years 17 years, तो कहना इसे हमारा कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेट हो जाता. कैसे? पूरा प्रोजेक्ट ए यू टेक 17 times एंड पूरा प्रोजेक्ट बी यू टेक 11 times. तब जाके लाइफ इक्वल होती एंड तब जाके यू वुड रीच एट कंपेरेबल पॉइंट. आर यू विजुअलाइजिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? So can I say this would involve complicated calculations, rather time consuming calculations. So in that case, we go for method 2, very straightforward method in equivalent annualized criteria or annualized equivalent criteria. उसमें क्या था? You take the NPV of project A and project B and divide it by PVAF. ठीक है. आई होप यू नो व्हाट इज पीवीएफ, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर. आई होप यू नो एट दिस स्टेज कि पीवीएफ क्या होता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है. यू नो दिस. तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूं. ठीक है. सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड annualized equivalent criteria in layman terms, it is nothing but per year. See, NPV of the project is for the entire life. करेक्ट. जो भी एनपीवी जनरेट होगा प्रोजेक्ट से वो पूरे लाइफ का होगा. सो पर ईयर, ऑन पर ईयर बेसिस अंदाज से मेरा एनपीवी कितना आएगा? दैट इज एन्युअलाइज इक्विवेलेंट एन्युअलाइज्ड क्राइटेरिया. इक्विवेलेंट एन्युअलाइज्ड एनपीवी ऑन एन्युअलाइज्ड बेसिस. ठीक है. सो कैन आई से इन दिस मेथड हम दोनों प्रोजेक्ट का एनपीवी पर ईयर बेसिस पे ला रहे हैं. पर ईयर एनपीवी कितना होगा? So now you can compare because both are on per year basis. Are you following? Everyone? So when life of the project, so the outcome of this is when life of the project is different, outrightly you cannot decide which project is best. ठीक है. Because it is not comparable. 3 साल के बच्चे को आप 20 साल के बच्चे के टीनेजर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते आउटराइटली. ठीक है. टू मेक इट कंपेरेबल और टू डिसाइड विच प्रोजेक्ट इज बेस्ट, यू फर्स्ट नीड टू ब्रिंग एट अ कंपेरेबल पॉइंट. एक लेवल, दोनों का एक सेम लेवल पे लाओ. Are you following? So to bring the two projects at same comparable level, there are two methods. One is replacement chain method, taking projects multiple times till the point the life gets equal. Option 2, use equivalent annualized criteria technique. Equivalent annualized criteria technique suggests or gives you कि per year basis how much NPV project is generating. NPV in total is for the life, but on per year basis कितना generate करते हैं? That is equivalent annualized criteria. And now you compare which project is best. Followed everyone? Well, any doubts in this? Yes, till 5th year you need to take annuity factor. So this was replacement chain method and equivalent annualized criteria.
Last concept of capital budgeting chapter was capital rationing technique. Investment decision was one of the lengthiest chapter, and I have to just bring it down in a very few hours. And I need to brush up all the concepts that you have learned in this chapter. Capital rationing concept. What was capital rationing concept? So you have multiple projects, A, B, C, D, E. All the projects have positive NPV. Sub project का NPV is positive. So as per NPV rule, you need to accept all the projects. But there is now fund constraints. सारे प्रोजेक्ट हम ले पाए, इतने फंड्स नहीं है. तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करने का? ऐसे सिचुएशंस में हमने फर्स्ट क्या किया, हमने प्रोजेक्ट्स को दो टाइप में डिवाइड कर दिए. चेक वेदर प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल और नॉट. और चेक वेदर दे आर इनडिविजिबल. सो प्रोजेक्ट को हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया था, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था. डिविजिबल प्रोजेक्ट्स मींस पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज पॉसिबल. लेट्स से प्रोजेक्ट ई इज, अगर पूरा प्रोजेक्ट ई लेना है तो 2 लाख की जरूरत है, बट मेरे पास 20,000 ही अवेलेबल फंड्स है. तो कहना है मैं पूरा प्रोजेक्ट ई नहीं लूंगा, बट 10% ऑफ प्रोजेक्ट ई लूंगा. आर यू फॉलोइंग? सो दैट इज प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल. ठीक है. पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज पॉसिबल. पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज पॉसिबल. An indivisible project means part of project is not possible. लेना हो तो पूरा प्रोजेक्ट लो, वरना आगे बढ़ो. So again continuing with the same example, project E is costing 2 lakh, but आपके पास 2 लाख अवेलेबल नहीं है, तो प्रोजेक्ट E is saying मुझे मत लेना, आगे बढ़ो अपने लाइफ में. ठीक है. That is indivisible project. ठीक है. So when projects were divisible, on what basis हम rankings देते थे प्रोजेक्ट को? On what basis? Can I say हम PI basis पे हम ranking देते थे? Means 1 rupee of outflow is generating how much rupee of cash inflows. Or another method was rankings based on NPV per rupee of outflow. दोनों में आंसर सेम आता था. सो यू नीड टू रैंक द प्रोजेक्ट्स. आइदर यू कैन रैंक बेस्ड ऑन पीआई और आइदर यू कैन रैंक बेस्ड ऑन एनपीवी पर रूपी ऑफ इन्वेस्टमेंट. एंड इफ प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल, हम रैंकिंग्स प्रोजेक्ट को बेस्ड ऑन नॉर्मल एनपीवी टेक्निक देते थे. कौन से प्रोजेक्ट को पहले लेना चाहिए, कौन से को सेकंड लेना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट को थर्ड लेना चाहिए, दिस इज अबाउट रैंकिंग्स. बट रैंकिंग्स देने के लिए कुछ मेथड तो यूज करनी पड़ेगी. सो व्हेन प्रोजेक्ट्स वर डिविजिबल, हम रैंकिंग्स, प्रोजेक्ट को रैंकिंग्स किस बेस पे देते थे? बेस्ड ऑन पीआई और एनपीवी पर रूपी ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेस पे देते थे. एंड व्हेन प्रोजेक्ट्स वर इनडिविजिबल, हम रैंकिंग्स बेस्ड ऑन एनपीवी टेक्निक देते थे. एंड देन वी यूज्ड टू सी which projects are getting selected. बोलो, याद आ रहा है कैपिटल रैशनिंग कॉन्सेप्ट का? सो इट मींस कंस्ट्रेंट ऑफ फंड्स. मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कैन बी एक्सेप्टेड, बट पैसे की कमी है, पैसे नहीं है. सो क्या करने का? तो फर्स्ट देखो, प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, वेदर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज पॉसिबल. इफ यस, give rankings based on PI or NPV per rupee of outflow and accordingly select the project. If projects are not divisible, part project नहीं ले सकते हैं, then give rankings based on NPV and select the projects. Clear? So this was about capital rationing concept. So I guess I have briefly covered all the conceptual understandings, explanation that were covered in this chapter. ठीक है.
So this was about investment decision. Now let me cover the concept. So tell about opportunity cost. I have asked. Which question? Opportunity cost is relevant and it will be considered as an outflow. हाँ बोलो. Yes, you can गुड speak. इवनिंग सर. हाँ जी, गुड इवनिंग. सर क्वेश्चन नंबर 10 में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में टैक्स को डिडक्ट नहीं किया है, लेकिन और कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें या तो नेट ऑफ टैक्स लिखा होता है या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में से हम टैक्स को डिडक्ट करके लेते हैं. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 में उसमें आफ्टर टैक्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसा लिखा हुआ है. नेट ऑफ टैक्सेस या आफ्टर टैक्स ऐसा वर्डिंग्स लिखा होगा. सर नहीं लिखा, सिर्फ लिखा हुआ है द स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स विल यूटिलाइज द स्पेस which would otherwise have been rented out for 30 lakhs per annum. 30 lakhs पर एनम, बस इतना ही लिखा है. इतना ही सर लिखा यस, है. बस इतना ही है. Okay, so now you have two options. Either you can assume it is after tax, or either you can yourself assume it is it is before tax. After tax means net of tax, or it is before tax. Ideally, I would advise you assume that it is before tax. Means इसमें से टैक्स माइनस नहीं हुआ है. ठीक है, एंड नीचे नोट लिख देने का सोल्यूशन में. अंडरस्टूड? ओके सर. क्लियर? ओके सर. थैंक Okay, यू सर. welcome. Okay, so this was about investment decision. Now let me briefly cover the concepts that you have learned, the different models that you have learned in dividend decision chapter. And if time permits, I will take RTP questions. Okay? We will revise questions from RTP. But my primary objective is to brush up all the concepts. ठीक है, डिविडेंड डिसीजंस. बोलो, इस चैप्टर में व्हाट वाज आवर प्राइम ऑब्जेक्टिव? इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू डिसाइड ऑन द ऑप्टिमम पे आउट पॉलिसी. पे आउट ऑफ डिविडेंड. पे आउट मीन्स पे आउट ऑफ डिविडेंड. टू डिसाइड on the optimum payout policy. This was objective number 1. Objective number 2. Objective number 1 was to decide the optimum dividend payout policy or optimum dividend payout ratio for the company. Objective number 2 was answering or briefly understanding about the question, does dividend decision affect market price of the company's share? Understanding this question. ठीक है, क्या कंपनी का डिविडेंड डिसीजन उसके मार्केट प्राइस को अफेक्ट करता है? दिस was the study, this was the concept that we studied in this chapter. तो इसमें से some authors or some researchers or some experts were saying yes, absolutely, company ka dividend decision absolutely affects the market price. But there was one author or one expert who would always say कि any dividend decision of the company, 10% दो डिविडेंड, 20% दो, 90% डिविडेंड दो, it will not impact the company's market price. Not just market price, but value of the company will also not change. ठीक है, सो ये सब हम स्टडी, ये सब हम फाइट पढ़ते थे इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में. आर यू एबल टू रिकलेक्ट? सो सम वुड से yes, some say yes, that dividend decision of the company do affect the market price. Means अगर कंपनी 10% डिविडेंड देगा तो मार्केट प्राइस वुड बी समथिंग, लेट्स से 100 रुपीज. बट अगर कंपनी
20% डिविडेंड देगा तो 100 नहीं होगा, 120 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। आर यू फॉलोइंग? इट विल चेंज द मार्केट प्राइस। आर यू फॉलोइंग? बट वन से नो, एक ऑथर ऐसा था जो बोलता था कि आप 20% डिविडेंड दो, डिविडेंड नहीं दो, 100% ऑफ अर्निंग्स डिविडेंड दे दो, कुछ भी करो, मार्केट प्राइस विल रिमेन इंटैक्ट। In turn, value of the share will remain in value of the company will remain intact. Not just market price, but ultimate wealth of the shareholder will not change. Are you following? So dividend decision does affect market price or wealth of the shareholder. Some say yes, one say no. Yes में कौन था? Can I say we studied about Walter's model? We studied about Gordon's model. Two important models of dividend decision. Then, under the no side, there was only one author, one expert, Modi Gilani Miller, MM model. ठीक है? अच्छा, apart from these three models, we also learned about some practical approaches. Practical approaches में one was Lintner's model of optimum dividend and one was residual approach. So these were the overall learning objective of this chapter, dividend decisions. क्या क्या पढ़ा था हमने? तो हमने वॉल्टर्स मॉडल पढ़ा था, गॉर्डन्स मॉडल पढ़ा था। अच्छा, वॉल्टर एंड गॉर्डन्स वर ऑफ द ओपिनियन की एनी चेंजेस इन डिविडेंड डिसीजन, एनी चेंजेस इन डिविडेंड पे आउट रेशियो विल इफेक्ट द मार्केट प्राइस। सो आप पे आउट रेशियो 10% से 50% कर रहे हो तो मार्केट प्राइस चेंज हो जाएगी। MM मॉडल क्या बोलता था? एनी चेंजेस, एनी फ्लक्चुएशंस इन डिविडेंड पे आउट रेशियो will not change the wealth of the shareholders. Not just wealth of shareholders. एक पॉइंट आगे, फर्म की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। Are you able to recollect the learning objectives of this chapter, students? Yes, MM irrelevance, Walter Gordon relevance theory. ठीक है? Okay. What was the Walter's formula? The formula given by Walter: price or the worth of the share today is nothing but dividend plus earnings minus dividend, ROI into ROI upon KE, the whole upon KE. ठीक है? अच्छा, how the formula was derived, उसका पूरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैंने मेरे रेगुलर क्लासेस में दिया हुआ है। सो आई विल नॉट अगेन comprehensively explain you the logic of derivation. ठीक है? I will just quickly brush up the formula that you have learned. ठीक है? So Walter's model, the formula is P0 is nothing but worth of the share today. The estimated worth of the share today is nothing but dividend plus E is nothing but earnings. D is dividend. ROI is rate of return on investment. K is your cost of equity, the whole upon K. याद आ रही है फॉर्मूला? सी यर डिविडेंड लास्ट पेड हो कि आने वाले साल में हो, इट इज कांस्टेंट। ठीक है? डिविडेंड इज कांस्टेंट अंडर वॉल्टर्स मॉडल। यहाँ पे मैंने कहीं पे भी D1, D2, D3, D4, D5 नहीं लिखा है, सिर्फ D लिखा है। सो D इज कांस्टेंट अंडर वॉल्टर्स मॉडल। ठीक है? अच्छा, वॉल्टर्स मॉडल वाज आल्सो कॉल्ड एज ऑल और नथिंग अप्रोच। इफ यू रिकलेक्ट, इस मॉडल को हम ऑल और नथिंग अप्रोच भी बोलते थे। मींस एज पर वॉल्टर मॉडल देयर आर ओनली टू ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। कंपनी के पास देयर आर ओनली टू ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, आइदर 0% कुछ भी डिविडेंड ना दो और सारा का सारा पे आउट कर दो। ए पे आउट रेशियो इज फ्रॉम अर्निंग्स। आई होप यू नो दिस।
That is the by default understanding. A payout ratio means earnings का payout ratio मैं बोलना चाहता हूँ. ठीक है. So Walter is saying कंपनी को either 0% डिविडेंड देना चाहिए और 100% डिविडेंड देना चाहिए. तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, 0% कब देना चाहिए, 100% कब देना चाहिए? A 0% dividend means, can I say 100% retention? And 100% dividend means 0% retention. तो कब देना चाहिए 0% dividend and कब 100% देना चाहिए? What concept have you learned in Walter's model? Can anyone comment in the chat box? Yeah, Pooja is correct. When ROI is greater than KE, means company की earning capacity is more than what investor would have earned from outside. तो वॉल्टर सेज बाहर क्यों जा रहे हो, कंपनी में ही रहो ना. व्हाई डू यू वांट टू अर्न, व्हाई डू यू वांट टू टेक डिविडेंड एंड इन्वेस्ट आउटसाइड? आप बाहर कम कमाओगे, कंपनी के पास ज्यादा कमाने की कैपेसिटी है, तो कंपनी के पास ही वो डिविडेंड रखो. Retain it with the company. You will get more return in the future. That was optimum payout ratio of 0% when ROI is greater than KE. 100% कब ROI is less than KE. Means इन्वेस्टर के पास बाहर ज्यादा कमाने का अपॉर्चुनिटी है, कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी कम है, बाहर इन्वेस्टर ज्यादा कमा सकते हैं. तो इन फेवर ऑफ इन्वेस्टर उनको सारा डिविडेंड दे दो, लेट देम अर्न फ्रॉम आउटसाइड, दे कैन अर्न मोर देन योर कंपनी. ठीक है. सो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो इज 100% इन दैट केस. अंडरस्टूड? सो इफ ROI is greater than KE, Walter says the best payout ratio for investors wealth perspective is don't pay any dividend to them. रिटेन करो, कंपनी उस रिटेन से ग्रोथ करेगी, उस ग्रोथ में investor would get more returns. But when ROI is less than KE, Walter said, company, you are not doing well. इन्वेस्टर बाहर से ज्यादा कमा पाएगी, उनको डिविडेंड दे दो और उनको अपने आप कमाने दो बाहर से. ठीक है, ज्यादा कमाने दो फ्रॉम आउटसाइड. सो इन फेवर फॉर इन्वेस्टर इज डिस्ट्रीब्यूट 100% डिविडेंड. ठीक है. सो दैट्स व्हाई Walter's model was also called as all or nothing approach. So this 0% and 100% is called as limiting value, range of Walter. Either 0% or either you give 100%, limiting value of Walter, 0 and 100. ठीक है. So this was all about Walter's approach. बोलो, any queries? Yes, all are correct. Next, Gordon's model. Again, Gordon's model is on the yes side, relevance side of dividend decision theory. As per Gordon also, any changes in dividend payout ratio will definitely change the market price. ठीक है. So Gordon's model, as per Gordon's formula, worth of the share today is nothing but D1 upon KE minus G. And इसका detailed explanation, detailed derivation of the formula I explained you during regular classes. अगर आपको याद आ रहा हो, sum to infinite series of geometric progression, उस concept के base पे Gordon's formula derive हुई है. याद आ रहा है? sum to infinite series of geometric progression. ठीक है. So here D1 is expected dividend in year 1. And not the last paid dividend. Expected dividend in year 1. आने वाले साल में how much dividend company is expected to give, that is D1. So how to calculate D1? It is nothing but last paid dividend plus उस पे आप growth add कर दो. ठीक है. But if you recollect, there were certain assumptions of Gordon's model. Assumption number 1, D will not remain constant. You expect growth in dividend every year. Every year dividend में growth होगा, but at a constant growth rate. ठीक है.
So growth rate was constant. This was assumption one. Till infinite life, the growth that you are expecting in dividend will remain same. This was assumption number one. Assumption number two, KE remains constant till the life of the company. जब तक है जान, KE of the company will remain constant. Assumption number three, very important. KE should always be higher than growth. ठीक है, अगर KE ग्रोथ G से कम है तो कहना है इसे डिनोमिनेटर विल बी नेगेटिव, and in turn price estimated worth of the share will come in negative. So price in negative, let's say -20 आया, इसका मतलब क्या पता है? मीन्स आप शेयर बेच रहे हो एंड यू आर पेइंग, शेयर बेचने में पैसे मिलते हैं, बट नेगेटिव प्राइस मीन्स paying, you are selling the shares and paying to the buyer, which is very illogical. Price of the share can never go below zero. Are you following? So assumption number three was K should always be higher than G. And last assumption, life of the company is infinite. Going concern assumption. This was Gordon's model का 4 assumptions. ठीक है? P0 is equal to D1 अपॉन KE माइनस. सो अगर आप ध्यान से देखो तो वॉल्टर मॉडल ने भी फॉर्मूला किसकी दी? टू एस्टिमेट द वर्थ ऑफ द शेयर टुडे, टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द शेयर टुडे. गॉर्डन ने भी फॉर्मूला किसकी दी? टू कैलकुलेट द एस्टिमेट प्राइस ऑफ द शेयर टुडे. अच्छा, MM भी फॉर्मूला किसकी दे रहा है? टू एस्टिमेट द प्राइस ऑफ द शेयर टुडे. बट लिंटनर जो फॉर्मूला दे रहा है ना, लिंटनर का कॉन्सेप्ट इज प्रैक्टिकल अप्रोच. ही इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस फाइट बिटवीन yes and no team, between relevance side, irrelevance side. He is not involved in that. लिंटनर सेज कि प्रैक्टिकली आने वाले साल में कंपनी को कितना डिविडेंड देना चाहिए, उस पे आप फाइट करो. शेयर की प्राइस क्या हो रही है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है. इट मे अफेक्ट द मार्केट प्राइस, इट मे नॉट अफेक्ट. आई एम नॉट कंसर्न विद दैट. आई एम कंसर्न कि आने वाले साल में व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी. सो लिंटनर ने फॉर्मूला दी D1 की. ठीक है, सो दिस डिफरेंस यू शुड नो इन योर कॉन्शियस माइंड कि सारे मॉडल फॉर्मूला दे रहे हैं टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द शेयर टुडे, बट लिंटनर एक ऐसा बंदा है विच इज गिविंग फॉर्मूला टू कैलकुलेट D1. फॉलोइंग? अच्छा, MM ने क्या फॉर्मूला दी थी? एज पर MM वर्थ ऑफ द शेयर टुडे इज D1 प्लस P1 द होल अपॉन 1 प्लस KE. ठीक है, रेस टू वन लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता. सो MM, to understand MM in layman terms, MM is trying to say आज जो शेयर का प्राइस बनेगा ना, वो किस पे डिपेंड करेगा? आने वाले साल का डिविडेंड और आने वाले साल के अंत पे जो प्राइस होगी शेयर की, द एक्सपेक्टेड प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 1, उस पे डिपेंड करता है आज का प्राइस. ठीक है, यू डिस्काउंट दिस 2 वेरिएबल्स एंड यू विल गेट द एस्टिमेटेड वर्थ ऑफ द शेयर टुडे. गॉर्डन क्या था? गॉर्डन वॉज considering the dividends till infinite period. MM says लंबा फ्यूचर मत देखो, आने वाले साल में क्या होने वाला है, जस्ट टेक दैट एज अ बेस. ठीक है, डिस्काउंट द वेरिएबल्स इन द कमिंग ईयर एंड यू ट्राई टू एस्टिमेट द प्राइस ऑफ द शेयर टुडे. ठीक है, सो MM का फॉर्मूला वाज P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 द होल अपॉन 1 प्लस KE. ठीक है, एंड MM का अल्टीमेट आउटकम, अल्टीमेट कंक्लूजन क्या था? डिविडेंड पेड, डिविडेंड नॉट पेड, wealth of shareholder in either cases was remaining same. ठीक है, डिविडेंड कंपनी देती है या नहीं देती है, शेयर होल्डर्स के वेल्थ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. द लॉजिक बिहाइंड दैट वाज, इफ यू रिकलेक्ट, आई हैव
given a logical explanation कि डिविडेंड क्या है, डिविड व्हाट इज डिविडेंड, कैन आई से इट इज मियर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम कंपनीज बैंक अकाउंट टू इंडिविजुअल्स बैंक अकाउंट। डिविडेंड क्या है, कंपनी के बैंक अकाउंट में से जाता हुआ सरप्लस किसके खाते में, इंडिविजुअल बैंक अकाउंट, ठीक है। अच्छा, कंपनी का बैंक अकाउंट, हु ओन्स अल्टीमेटली कंपनीज बैंक अकाउंट, द शेयर होल्डर्स ओन्स कंपनीज बैंक अकाउंट, करेक्ट। सो कंपनी के बैंक अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हैं, ओनर है शेयर होल्डर्स, अब वो पैसे जा रहे हैं इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स के अकाउंट में इन द प्रपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग। So can I say there will not be any change in the worth of the shareholders, wealth of the shareholders? So ऐसा समझो, आपका एक बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में है, आपका एक बैंक अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है। आपने 1 लाख रुपया एक्सिस बैंक से एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफर कर दिया, तो क्या आपकी वेल्थ बढ़ गई क्या? ये एक जगह से कम हुई, कंपनीज बैंक अकाउंट से कम हुई, इंडिविजुअल बैंक अकाउंट में बढ़ गई। अल्टीमेटली वेल्थ रिमेन सेम। So this was the whole base of MM. Recollecting, ठीक है। अच्छा, not just wealth, value of firm was also remaining same, and MM proved this point, ठीक है, by taking an illustration. Understood? So the core conclusion of MM theory is whether you pay dividend or whether you not pay the dividend, wealth of the shareholder will remain same. Not just wealth, overall firm की value will also remain same. ठीक है। The formula to estimate the price of the share today by MM is D1 plus P1 the whole upon 1 plus KE. Understood? So this was MM model. Next was practical approach. उसमें हमने देखा था लिंटनर्स मॉडल। लिंटनर्स मॉडल, लिंटनर ने क्या किया था, लिंटनर ने एक रिसर्च करी थी। रिसर्च किसकी करी थी, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, उनके फाइनेंशियल मैनेजर, उनके सीएफओ का सर्वे किया था, ठीक है। सो उस सर्वे का आउटकम का रिजल्ट क्या आया था, तो रिजल्ट वाज एवरी फाइनेंशियल मैनेजर has a target payout ratio that they want to achieve in long run. Achieve in long run. This was outcome number 1. जितने भी फाइनेंशियल मैनेजर्स का सर्वे किया था, सबका आंसर एक ही था, सबके माइंड में, सबके दिमाग में there was a target payout ratio that they wanted to achieve in long run. हाँ, payout ratio may differ from a financial manager to financial manager. किसी का 20% टारगेट पे आउट रेशियो हो सकता है, किसी का 40% हो सकता है, किसी का 10% हो सकता है, बट एवरीवन हैड अ टारगेट इन देयर माइंड दैट दे वांटेड टू अचीव इन लॉन्ग रन, ठीक है। दिस वाज आउटकम नंबर 1. आउटकम नंबर 2, every FM or CFO were concerned with, they were concerned with changes in dividend. They are concerned with changes in dividend rather than absolute amount, rather than absolute amount of dividend. Rather than absolute amount of dividend. इसका मतलब क्या, there are two companies, let's say A Limited, B Limited. A Limited का last dividend was let's say ₹10. B Limited का last dividend was let's say ₹1100. In the current year, A Limited is expecting to give ₹18 and B Limited is expecting to give ₹1110. So in absolute terms देखें तो B Limited ज्यादा डिविडेंड दे रहा है देन कंपनी A, बट फाइनेंशियल मैनेजर were not concerned with this absolute amount. They were concerned with changes in dividend.
If you see A Limited में dividend growth is happening 80%. Oh, very high. And B Limited में कितना हो रहा है? Only 10 rupees on 1100. मतलब less than 1%. Yes or no? Less than 1% हो रहा है. So they are concerned with these changes in dividend rather than absolute amount of dividend. दिखने में A Limited का amount is small. बट चेंजेस में देखे, चेंजेस वाइज देखे 80% चेंज हो रहा है. आर यू फॉलोइंग? सो दे आर कंसर्न विद दिस थिंग. ये 80% उनको पिंच होगा रेदर देन पिंचिंग ऑफ दिस 1110. आर यू फॉलोइंग स्टूडेंट्स? सो दिस वाज सेकंड आउटकम. थर्ड वाज dividend decisions once taken are unlikely to be reversed. So every financial managers were like, एक बार हमने जो डिविडेंड डिसीजन ले लिया है उसको हम रिवर्स करना नहीं चाहते, फिर हम हमारी भी नहीं सुनते. इसका मतलब क्या था पता है? लेट्स से लास्ट ईयर डिविडेंड वाज 10 एंड 1100, तो इस साल हम मिनिमम 10 तो देंगे ही, बिकॉज ये 10 रुपए देने का डिसीजन किसने लिया था पिछले साल? हमने ही लिया था. तो वी आर नॉट लाइकिंग टू रिवर्स दैट डिसीजन. सो मिनिमम आपको 10 रुपया करंट ईयर में तो मिलेगा ही, बिकॉज पिछली बार 10 रुपया हमने ही दिया था. वी ओनली डिसाइडेड टू गिव यू ऑल ₹10 इन द प्रीवियस ईयर. सो वी डोंट लाइक टू रिवर्स आवर ओन डिसीजन. आर यू फॉलोइंग? हम हमारी भी नहीं सुनते. एक बार डिसीजन ले लिया, हमारी भी नहीं सुनेंगे. अंडरस्टूड? सो दिस वर द 3 आउटकम ऑफ लिंटनर सर्वे, एंड बेस्ड ऑन दिस 3 आउटकम लिंटनर डिराइव्ड द फॉर्मूला फॉर D1 expected dividend in the coming year. Again I am repeating, इसने P0 की फॉर्मूला नहीं दी है. लिंटनर is least concerned with market price of the share. Is concerned with practically कंपनी का डिविडेंड क्या होना चाहिए. So the formula was D0 plus earnings into target payout ratio minus D0, and this whole thing was multiplied with adjustment factor. ठीक है? Are you able to recollect the formula? So लिंटनर का लॉजिक इसकी आने वाले साल में कंपनी का एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या होना चाहिए. ठीक है? प्राइस तेल लगाने गया, कुछ भी हो, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट. दिस वाज लिंटनर्स मॉडल. लास्ट, residual approach. Residual approach, a very practical approach. What does this model say? First, utilize your reserves and surplus for any future expansion plans. मतलब आपकी कंपनी फ्यूचर में कोई एक्सपांशन, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, नया प्रोजेक्ट लेना चाहती है, एक्सपांशन करना चाहती है, तो पहले आपका रिजर्व उसके लिए यूटिलाइज करो. And still, if reserves are there after utilizing for expansion, then distribute the dividend. Are you following? This is a very practical model. Residual. Bacha kucha reserves, you distribute the dividend. But first priority, give it for expansion, give it for new business, new project, new product, whatever you want to do. अगर कोई भी प्लान नहीं है इन नियर लॉन्ग टर्म फ्यूचर, कोई भी एक्सपांशन करने का प्लान नहीं है, then distribute the dividend. Understood? So this was residual model. Acha, there was one more model, Graham and Dodd model. Graham and Dodd model. Again, Graham and Dodd model has given formula to calculate worth of the share today. It is nothing but dividend plus earnings by 3, the whole multiply by multiplier. There was a multiplier. Iska detailed logical explanation I have given in my regular classes. So you can, if you want to understand the logic once again, you can refer to that YouTube video. Okay? So Lintner is the only expert that has given formula for D1 instead of P0. Rest all experts have given their formula to find the estimated worth of the share today. Understood everyone? So formulas आपकी revise हो गई.
कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज हो गए डिविडेंड डिसीजन के? Sir, if after deducting depreciation from cash inflows, we are getting negative cash inflows. After deducting cash inflows, if from profit, if you are deducting depreciation, means आपका लॉस हो रहा है बुक्स में, ये लॉस हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर में ये लॉस सेट ऑफ हो जाएगा. सो नेक्स्ट ईयर के इनकम में से ये रेड्यूस करना है, टैक्स कोई नहीं आएगा. ठीक है. सो इन दैट ईयर यू विल नॉट गेट एनी टैक्स बिकॉज लॉस हो रहा है. सो लॉस में टैक्स नहीं होता कभी भी. सो टैक्स वुड बी जीरो इन दैट केस. हाँ, बट ये लॉस का क्या करना है, लॉस वुड बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम इन द नेक्स्ट ईयर. ऐसा करना है. सो नेगेटिव टैक्स नहीं आता कभी भी, टैक्स जीरो आएगा इफ देर इज अ लॉस एंड दैट लॉस विल बी यूटिलाइज्ड टू बी सेट ऑफ against next year's income. If not given in question to set off, then it is presumed that you have to set off. What you have learned in tax, what is the tax law? That loss of one income will be set off against income from next year. So you have to set off that. That is a standard assumption. नहीं बोला है तो that is a standard assumption. ठीक है. So now let's take one practical example, practical question on investment decision from RTP May 2026. We will try to solve completely if time permits. If time does not permits, I will just give you the method, the आगे का steps so that you can solve. Equip Lease Financial Services Limited is a specialized equipment leasing company that has been operating in the industrial equipment finance space for over 15 years. ठीक है. The company's business model, हमारा business क्या है? It involves purchasing high value machineries and leasing it to manufacturing companies. मतलब हम high end machineries खरीदते हैं एंड फिर उसको लीज मींस रेंट पे दे देते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, thereby earning rentals, lease rentals, while retaining the ownership of the asset. While retaining the ownership of the asset means उस asset के ओनर हम रहेंगे. मींस ओनर हम रहेंगे मींस डेप्रिसिएशन क्लेम करने हमें मिलेगा. आर यू फॉलोइंग? दिस इज व्हाट दिस लाइन इज ट्राइंग टू से. असेट हम हाई एंड मशीनरीज खरीदेंगे, we will give them on rent to manufacturing companies, but ownership हमारे पास रहेगी, just like car rentals. ठीक है. यहाँ पे मशीन है. The company has built a strong reputation for providing flexible financing solutions tailored to client specific patterns and business cycles. Their leasing arrangements helps client conserve capital by access state of the art equipment. Okay. Lease has recently purchased a specialized CNC machine with the following information. मतलब करंटली हमने एज अ कंपनी एक मशीन ली है जिसका कॉस्ट है 10 लाख. इस मशीन का हम क्या करेंगे, हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, रेंट पे देना. किसको रेंट पे देंगे, क्या रेंट पे देंगे, वो आगे क्वेश्चन में आएगा. ठीक है. लाइफ ऑफ दिस मशीन इज 4 years. सैलवेज इज नील. डेप्रिसिएशन, since we are the owner of this asset, depreciation हमारे रिटर्न में क्लेम होगा. So to claim the depreciation, we have two methods. One is under SLM or either we can use unit of production method. Hey, I hope you know UOP, unit of production method. Unit of production method में depreciation कैसे calculate होगा? Based on the ratio of production each year. Are you following? So let's say पूरे 4 साल में हमने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे पूरे 4 साल में, एंड फर्स्ट ईयर में लेट्स से हमने 2,000 प्रोड्यूस करे यूनिट्स, नेक्स्ट ईयर में 3,000 करे, थर्ड ईयर में 4,000 करे यूनिट्स प्रोड्यूस, सो 5,9, एंड लास्ट ईयर में 1,000 यूनिट्स करे. सो 10 लाख का मशीन कॉस्ट
इस पे हमें डेप्रिसिएशन तो देना पड़ेगा, बट इन द रेशियो ऑफ 2:3:4:1. आर यू फॉलोइंग? दिस इज यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड डेप्रिसिएशन. सो फर्स्ट ईयर में हम 2/10 मीन्स 2 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे. लाइकवाइज ईयर 2 में हम 3 लाख का डेप्रिसिएशन करेंगे बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन. जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तब मशीन का वेयर एंड टेयर ज्यादा, जब प्रोडक्शन कम होगा तब मशीन का वेयर एंड टेयर कम. आर यू फॉलोइंग? दिस इज यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड. क्लियर? rational understanding. So there are two methods available to the company for depreciation purpose, but दोनों में आंसर अलग आएगा. Why? Because depreciation amount would change. Understood? Lease rentals earned by company subject to tax. Equip lease cost of capital. Can I say this is discounting rate 10%, tax rate 25%. Tech Manufacture Industry Limited, a growing precision engineering company, has approached us expressing interest in leasing this machine. Means we are equip lease finance service. We are equip lease finance service. अब हमारे पास एक ऑफर लेके आए हैं टेक मैन्युफैक्चर कंपनी. उनको ये मशीन में इंटरेस्ट है रेंटल पे लेने पे. ठीक है, ऑन लीज रेंटल दे आर इंटरेस्टेड. टेक मैन्युफैक्चर हैज प्रोवाइडेड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एक्सपेक्टेड पैटर्न. सो देयर एक्सपेक्टेड पैटर्न इज पहले साल में कम प्रोडक्शन होगा, दूसरे साल में मीडियम, थर्ड ईयर में पीक हाई एंड फोर्थ ईयर में पीक. So can I say ratio of utilization is 1, 2, 3, 4. So here UOP ratio is 1:2:3:4. Let's say पूरे 4 साल में 10 यूनिट प्रोड्यूस करने वाले हो, तो फर्स्ट ईयर लो फेज ओनली 1 यूनिट विल बी प्रोड्यूस, सेकेंड ईयर लिटल ग्रोथ फेज 2 यूनिट्स, थर्ड हाई फेज 3 यूनिट्स, फोर्थ ईयर पीक फेज 4 यूनिट्स. ठीक है, सो दिस रेशियो इज गिवन. मेरे एग्जांपल में जो ये रेशियो था ना 2:3:4:1, दे हैव गिवन एज 1:2:3:4. ठीक है, क्लियर टिल हियर? द पैटर्न इज साइक्लिकल फॉर बिजनेस स्केलिंग अप production with new equipment, starting slow as operators are trained and processes are optimized, then ramping up to full capacity. ठीक है, so again they are talked about the ratio of utilization. Mr. Vikram Malhotra, the chief credit officer at Equip Lease, is tasked with structuring an appropriate lease arrangement. He faces several strategic decisions. How much portion of the cost is recovered from the tax savings on depreciation under both the methods, that is SLM basis and production method? Means in short, question 1 is all about how much is the present value, how much is the present value of tax shield on depreciation. डेप्रिसिएशन के वजह से कितनी बचत होगी? सो कैन आई से आइडियली डेप्रिसिएशन बाय इट्स वेरी नेचर इज इररेलेवेंट, बट टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन इज रेलेवेंट. सो उसके वजह से कितनी बचत होगी कंपनी के कॉस्ट में, दैट दे हैव आस्क्ड इन पॉइंट नंबर 1. अंडरस्टूड द क्वेश्चन? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड ऑन ड्यू टू डेप्रिसिएशन और ड्यू ऑन डेप्रिसिएशन. अंडरस्टूड? सो अगेन आई एम रिपीटिंग, depreciation अपने आप में it is irrelevant, but tax savings on depreciation is relevant. ठीक है, why? Because it will save some tax ना. Savings in tax means inflow means reduction in outflow. Are you following? So this is what they've asked, present value of tax shield due to depreciation. But sir, depreciation तो यहाँ पे 2 मेथड है, SLM एंड यूओपी मेथड. फॉलोइंग? हाँ, तो हमें दोनों मेथड से फाइंड करना है हाउ मच टैक्स शील्ड इज ऑन डेप्रिसिएशन ड्यू टू एसएलएम, हाउ मच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड इज ऑन ड्यू टू डेप्रिसिएशन यूजिंग यूओपी मेथड. ठीक है, ओके. हाउ मच इज द प्रोजेक्ट कॉस्ट?
प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 10 लाख, लाइफ इज 4 years, ठीक है। सो नंबर 1, उसमें हम पहले कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन एसएलएम बेसिस। बोलो एसएलएम बेसिस की फॉर्मूला क्या है डेप्रिसिएशन की? कैन आई से इट इज ओरिजिनल कॉस्ट लेस सैलवेज डिवाइड बाय लाइफ। सो ओरिजिनल कॉस्ट is 10 lakh of the machine. Salvage given in the question is 0. If you read the question carefully, residual value is nil. ठीक है? Life is 4 years. So can I say every year 2.5 lakh का depreciation होगा? हाँ, but this amount is irrelevant for us in decision making. Why? Because 2.5 lakh is non-cash expense. Cash flow में कोई बचत नहीं होगी. इस पे tax savings. Are you following? इस पे every year जो tax savings होगा, that is relevant for us. Are you following, everyone? So can I say tax shield on depreciation would be, every year tax shield on depreciation would be 2.5 lakh into the tax rate. ये depreciation कितना tax बचा के देगा? तो 2.5 lakh into tax rate. So 2.5 lakh into 25%. कितना आ रहा है? 2.5 lakh into 25%. 2,50,000 into 25%. 62,500. So this tax shield on depreciation would be for every year. Year 1 में 62,500 कैश इनफ्लो बचेगा आपका इन द फॉर्म ऑफ टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन। ईयर 2 में भी 62,500, ईयर 3 में भी 62,500, ईयर 4 में भी 62,500. You have discounting rate, you have each year cash inflow. Can you find present value of tax shield on depreciation? Correct? So calculation of present value of tax shield on depreciation, when first we are currently using SLM method. So year 1, 2, 3 and 4 cash inflow due to tax shield is 62,500 each year. Every year ये टैक्स बचत होगा. So discounting rate is given at 10%. Can you find PVCI? So this will be cost savings due to tax shield on depreciation using SLM method. ठीक है? अच्छा, this is one way. Another way is if you look at the cash inflow pattern closely, it is constant every year. So when cash inflows per annum are constant every year, there is shortcut method to find PVCI. What is that shortcut method? Shortcut method is annual cash inflows into PVAF factor. Yes or no? You multiply with annuity factor. Annuity factor rate is 10% for 4 years. ठीक है? So both the ways are correct. This is shortcut method and this is our normal tabular method. So PVCI कितना आ रहा है? PVCI is coming to 198,116.59. So 198,117. ठीक है? So this is savings in outflow, savings in cost. ठीक है? Due to tax shield on depreciation using SLM method. So this was number 1, SLM method. Likewise हमें UOP method लेना पड़ेगा. So to calculate tax shield on depreciation using UOP method, first step UOP method के हिसाब से depreciation क्या आ रहा है वो तो कैलकुलेट करो, फिर उस पे टैक्स सेविंग्स पे जाओगे ना. पहले डेप्रिसिएशन कितना है वो तो कैलकुलेट करो. डेप्रिसिएशन यूजिंग UOP मेथड. ठीक है? अच्छा, UOP रेशियो
for each year is 1:2:3:4, correct? Purchase value, original cost of the machine is again 10 lakh. So year 1, 2, 3, 4. बोलो depreciation in year 1. Depreciation in year 1 कितना आएगा? Can I say it would be 10 lakh into 1 by 10? Yes or no? 1:2 means 3 plus 3, 6 plus 4, 10. So can I say it will be 10 lakh into 1 by 10? Everyone? So first, yes. First year में 1 lakh depreciation, 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh. But again, हमें depreciation से मतलब नहीं है. It is not our cash inflows. Tax savings due to depreciation is our cash inflows. Are you following? So tax shield at 25%. So can I say this will be 25,000? This will be 50,000. This will be 75,000. And for year 4, it will be 1 lakh. Tax savings will be our cash inflows. ठीक है? इसको हम डिस्काउंट करेंगे at 10% for each year and we will get present value of tax shield. Please tell me how much PVCI is coming by discounting these cash inflows. Yeah, are you following this? Depreciation is irrelevant, non-cash expense है. उस पे जो tax savings होते हैं, that is relevant cash inflow. तो टैक्स सेविंग्स क्या हो रहा है? ईयर 1 में 25,000, ईयर 2 में 50,000, ईयर 3 में 75,000, ईयर 4 में 1 लाख. उसको हम डिस्काउंट करेंगे एट 10% बिकॉज डिस्काउंटिंग रेट इज 10%. सो पीवीसीआई inflow due to tax savings, or you can say cost savings. कितना आ रहा है? I hope you know how to discount. At this stage, I hope you know how to discount. टोटली बता दो ना पीवीसीआई करके. 25,000 डिवाइड बाय 1.1 प्रेस इक्वल टू 1 टाइम. 50,000 divided by 1.1 press equal to 2 times. So you will get present value for year 2. 75,000 divided by 1.1 press equal to 3 times. So you will get PVCI for year 3. सब total करके let's just not waste the time. अच्छा 188,699 means 188,700. 188,700. Let's not just waste the time and let's see the answer. क्या आ रहा है? Okay, 188,650 इसलिए आ रहा है because they have rounded off to 3 decimals. और आपने जो किया होगा वो सारे डेसिमल्स लिया होगा. ठीक है? So no worries in that. That is correct. And हमारा ये आ रहा था 198,125. Our was coming as 198,117. सिर्फ 8 रुपए का फर्क है. Again, it is due to decimals rounding off. So don't worry in that. ठीक है? So कहना है आंसर 1 डन. एसएलएम बेसिस के हिसाब से हमारे कॉस्ट में बचत कितनी होगी? डेप्रिसिएशन कॉस्ट में कितनी बचत करके देखा? 198,117 in present value terms. And UOP method will save the cost by rupees 188,700 in present value terms. Understood? So this is answer to question 1. ठीक है? सो हमें जो 10 लाख कॉस्ट रिकवर करना है ना, 10 लाख इज आवर ओरिजिनल कॉस्ट. उसमें कहना है इसे 198,117 तो डेप्रिसिएशन के टैक्स सेविंग्स की वजह से ही रिकवर हो रहा है. आर यू फॉलोइंग? 10 लाख इज आवर ओरिजिनल कॉस्ट दैट आई वांट टू रिकवर. उसमें से 198,117 तो डेप्रिसिएशन ही रिकवर कर रहा है. डेप्रिसिएशन नहीं बट उसका टैक्स सेविंग्स ही रिकवर करके दे रहा है. Hey, are you following everyone? Students, clear till here? Are you getting what I'm trying to say? अच्छा, if you use UOP method, 10 लाख is our original cost. उसमें से 188,700 तो डेप्रिसिएशन के वजह से रिकवर हो रहा है. डेप्रिसिएशन के वजह से आई मीन टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन. यस, शील्डिंग, प्रोटेक्शन. ठीक है? सो दिस वाज आंसर 1. Point number 1. Point number 2, what have they asked? Point number 2 is they have asked
find the portion of investment to be recovered from lease rentals. ठीक है? Okay. So 10 lakh is the overall investment cost. ठीक है? उसमें से 198,117 तो डेप्रिसिएशन की वजह से रिकवर हो रहा है. तो कहना है बैलेंस विल बी रिकवर्ड ड्यू टू लीज रेंटल्स. यस और नो? अब हमें लीज रेंटल्स ऐसे अब हमें लीज रेंटल्स ऐसा रखना है कि अब बैलेंस ही रिकवर हो. आर यू फॉलोइंग एवरीवन? सो बैलेंस पोर्शन ही लीज रेंटल्स से रिकवर करना है. दिस इज व्हाट पॉइंट नंबर 2 इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. अगेन आई एम रिपीटिंग, 10 लाख इज आर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट. ठीक है? इन द मशीन अंडर बोथ द मेथड्स, एसएलएम बोलो यूओपी बोलो, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट टू बी रिकवर्ड is 10 lakh each. करेक्ट. अच्छा, इसमें से टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन कुछ रिकवर करके दे रहा है इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स 198,117 एंड दिस वाज 188,700. तो कहना है अब लीज रेंटल से बैलेंस ही रिकवर करना होगा. 10 लाख में से 198 तो डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड ही रिकवर करके दे रहा है आपको. तो अब बैलेंस आप लीज रेंटल से रिकवर करो, लीज रेंटल चार्ज करो एंड बैलेंस रिकवर करो. आर यू फॉलोइंग स्टूडेंट्स? एवरीवन? सो बैलेंस टू बी रिकवर्ड फ्रॉम लीज रेंटल्स. कितना आ रहा है बैलेंस कॉस्ट? कितना लीज रेंटल से रिकवर करना होगा? सो 10 lakh minus 198,117. So 10 lakh divided by 10 lakh minus 198,117, 801,883. तो कहना है इसे अब हमारा टारगेट ये है कि लीज रेंटल से हमें सिर्फ 8,01,883 रिकवर करना है. 10 लाख रिकवर करने का टारगेट नहीं है. 8,01,883 रिकवर करना है लीज रेंटल से, बिकॉज 198 तो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन रिकवर करके दे रहा है. ठीक है? डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन आई मीन टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन. जब जब डेप्रिसिएशन बोलूं तो आप समझ जाओ टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हो. And this comes to, for UOP, it comes to 811,300. ठीक है? Everyone clear till here? Point number 2 clear. Let's check the answer. Point number 2. See, investment to be recovered 801, 875, 811, 350. ठीक है? Under both the methods. Okay. Now let's see part C में क्या पूछा. Let's come to part 3. So part 2 clear till here everyone? Part 3. Determine minimum lease rentals needed to recover the balance cost of investment. Means to recover this cost, हमें लीज रेंटल्स क्या रखने चाहिए एवरी ईयर. दिस इज व्हाट क्वेश्चन 3 इज आस्किंग अंडर बोथ द मेथड्स, अगेन यूओपी एंड एसएलएम. क्वेश्चन समझ रहा है? व्हाट शुड बी द मिनिमम लीज रेंटल्स. सी, हमारा मिनिमम लीज रेंटल एटलीस्ट हमारा कॉस्ट रिकवर हो उतना तो रखेंगे ना. कॉस्ट ही रिकवर ना हो, इतने भी गधे नहीं है हम. इतना भी कम लीज रेंटल, इतना भी दया भावी नहीं है. आर यू फॉलोइंग एवरीवन? एटलीस्ट मिनिमम हमारा कॉस्ट रिकवर हो उतना तो मिनिमम लीज रेंटल रखेंगे ही, चार्ज करेंगे ही कंपनी से. सो हाउ मच इज दैट लीज रेंटल इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स? दिस इज व्हाट क्वेश्चन 3 इज ऑल अबाउट. आर यू फॉलोइंग? ए डिवाइड बाय लाइफ करेंगे तो वो क्या मिल जाएगा? दैट इज यूनिफॉर्म लीज रेंटल बन जाएगा. But that would not be present value terms. Are you following everyone? हमें present value terms में चाहिए. After adjusting the tax shield under both the options, if equivalent
please charge equal rentals over the 4 years. Means every year हमारा जो लीज रेंटल होगा. अच्छा, क्वेश्चन 3 में भी दो कंडीशन दी है, दो ऑप्शन दी है. क्वेश्चन 3 में ऑप्शन 1 है लीज रेंटल्स आर चार्ज्ड इक्वली ओवर द लाइफ. मीन्स एवरी ईयर आपका जो लीज रेंटल कैश इनफ्लो होगा ना वो सेम होगा. फॉर एग्जाम्पल 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख. आर यू फॉलोइंग? ये सेम होगा. तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन 2. When lease rentals are charged based on this ratio 1:3, 2:3:4. ठीक है? When lease rentals are charged based on UOP ratio. Are you following? So question 3 mein they have given you two options. When lease rentals are equally charged over the years. So let's take lease rentals. We want to find this amount lease rentals. So let's take it as X. So option 1 में year 1 में X होगा, year 2 में X होगा, year 3 में X होगा, year 4 में X होगा. करेक्ट? ऑप्शन 2 में क्या होगा? ऑप्शन 2 में X होगा year 1 में, year 2 में 2X होगा, year 3 में 3X होगा, year 4 में 4X होगा. Are you following? यूओपी रेशियो में लीज रेंटल चार्ज होगा. मींस ईयर 1 में कम प्रोडक्शन हुआ है तो लीज रेंट भी कम चार्ज करेंगे. बिजनेस ज्यादा हुआ है, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, बिजनेस ज्यादा हुआ है तो लीज रेंट भी ज्यादा चार्ज करेंगे. आर यू फॉलोइंग एवरीवन? वी डोंट नो दिस लीज रेंटल अमाउंट, सो वी आर टेकिंग इट एज एन एक्स. they understood till here students? They are asking कि हमारा every year what should be the minimum lease rent amount. मिनिमम लीज रेंट अमाउंट हम ऐसा रखेंगे कि हमारा कॉस्ट रिकवर हो, बैलेंस कॉस्ट रिकवर हो. एवरीवन क्लियर टिल हियर? So see, when lease rentals are charged equally, can I say annual lease will be X for all years? अच्छा, when lease rentals are charged based on UOP pattern, it will be X, 2X, 3X, 4X. ठीक है? Clear till here? So option 1. When lease rentals are charged equally over the years. तो कहना ऐसे यहाँ पे मैं ईयर लिखूंगा. अच्छा, हम यहाँ पे कैश इनफ्लोस लिखते हैं. कैश इनफ्लोस आइडियली कुछ लीज रेंटल का अमाउंट आएगा बिकॉज लीज रेंटल इज एन इनफ्लो, बट वी वांट टू फाइंड दैट इनफ्लो अमाउंट, सो वी आर टेकिंग दिस एज एन एक्स. आर यू फॉलोइंग? अच्छा, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 10% करेंगे एंड वी विल गेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कैश इनफ्लोस. ठीक है? सो बताओ, 1x 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 1x, what is my total PVCI of lease rentals if we discount it at 10%? तो डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा 0.909 पॉइंट. आई एम जस्ट कॉपी पेस्टिंग द डिस्काउंटिंग फैक्टर. 0.826, 0.751, 0.683. So x into 0.909, the 0.909x, 0.826x, 0.751x, 0.683x. So can I say my total present value of lease rentals would come to 2.378x, everyone? Clear? Yes or no? Clear till here? So our lease rental is X. So present value of all the lease rentals for all the 4 years comes to 2.378x. Yes or no, everyone? And I want to recover
801,883 if SLM is used, 811,300 if UOP method is used for depreciation. Yes or no? So how much? So therefore, minimum lease rentals to be charged when SLM depreciation is used. How much I want to recover? 801,883 divided by 2.378. Are you following? And when UOP is used, I want to recover 811,300 divided by 2.378. Following everyone? ठीक है? So can I say minimum lease rental is nothing but present value of lease rentals should be equal to my recovery? Yes or no? So present value of lease rental is 2.378 should be equal to my recovery is 801,883 in case of SLM and 2.378x is equal to 811,700 in case of UOP. Okay? So how much minimum lease rentals I need to charge? So it will come to 801,883 divided by 2.378. 337 x comes to 337,209 rupees. So आपका minimum lease rent every year कितना होना चाहिए? 337,209 रखोगे आप, तब जाके you will be able to recover your balance cost of 801,883. Are you following everyone? This is how you interpret. And for case 2 it comes to 811,700 divided by 2.378. So your minimum lease rental every year should be 341,337. अगर आपने every year 341,337 lease rental रखा minimum, उससे ज्यादा रखा तो फायदे में रहोगे, but minimum 341,337 रखा तो you will be able to recover your balance cost 811,300. Are you following, students? This is the whole point. So आया 337,206 हमारा आ रहा है ना, आया था 337,209. So 3 rupees rounding off difference. ठीक है? And 341,190 when equal lease rents are charged. ना equal वाला देखना, UOP lease rentals बाकी है, equal वाला clear. 341,337 and 341,190. So very close rounding off difference. Understood? So अगर आप minimum lease rent 337 रखोगे तो आप 801 रिकवर कर पाओगे, जो आपको रिकवर करना है फ्रॉम लीज रेंटल्स. 337 से कम लीज रेंट चार्ज किया, यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर दिस कॉस्ट. Following, this is how you interpret. Clear? Everyone followed? Please reply in the chat box. We have only 7 minutes and I have to cover UOP. When lease rentals are charged based on UOP. Please revert on the chat box. No revert, I will presume it is clear. Okay? Okay, moving forward. Let's go with our option 2. Charging lease rent based on UOP method. Option 2. Charging lease rent. जैसे डेप्रिसिएशन यूओपी प्रोडक्शन रेशियो पे दिया, वही रेशियो लेके अब लीज रेंट भी चार्ज करो. दिस इज व्हाट ऑप्शन 2 इज ऑल अबाउट. दिस इज ऑल्सो लॉजिकल ना. फर्स्ट ईयर में कम प्रोडक्शन हुआ है, मींस बिजनेस कम हुआ होगा कंपनी का. सो कंपनी सेइंग यार फर्स्ट ईयर में कम प्रोडक्शन है, बिजनेस कम है, तो कम लीज रेंट चार्ज करो. सो ठीक है, दे हैव गिवन ऑफर कि आप यूओपी रेशियो में ही चार्ज करो. अंडरस्टैंडिंग? सो ईयर 1 2 3 4.
लीज रेंट कैश इनफ्लो वुड बी ईयर 1 का x, ईयर 2 का 2x, ईयर 3 का 3x, ईयर 4 का 4x. ठीक है, दिस वी विल डिस्काउंट एट 10% everyone. अच्छा, ओके, वन मोर थिंग. हमने लीज रेंट तो लिया, बट कैन आई से लीज रेंट विल ऑल्सो सेव सम टैक्सेस? यस और नो? सी, यहाँ पे वन पॉइंट आई मिस्ड आउट. This is the lease rent in absolute amount, but this lease rent will also save some taxes. Yes or no? So you have to take your after tax cash inflow. Are you following? Means after tax cash inflow means lease rent will save some taxes for you all. So effective after tax lease rent will not be X. It will be 0.75X. Yes or no? X का 25% तो बच जाएगा in the form of tax. So after tax cash inflow in the form of lease rent would be 0.75x in year 1, 0.75x in year 2, 0.75x in year 3, 0.75x in year 4. And that you multiply it with 0.909. Okay, so this will change. 0.909 into 0.75. 0.682. ठीक है, 0.826 into 0.75. 0.620. 620. And likewise you will do for year 3, year 4. Are you following? So lease rent जो भी amount होगा उस पे भी tax savings होगा. So our cash inflows would be after tax lease rentals. So after tax lease rental will be X minus 25%, which comes to 0.75X. ठीक है? So यहाँ पे भी first we will calculate after tax cash inflow. फिर उसको डिस्काउंट करेंगे at 10% एंड उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे. Understood everyone? So after tax for year 1 will be 0.75x. Year 2 it will be 1.5x. Year 3 it will be 2.25x. And year 4 it will be 3x. Followed? Relevant cash inflow is after tax cash inflow. टैक्स सेविंग्स होगा ना लीज रेंटल में भी. Are you following everyone? So after tax lease rental would be 0.75, 1.5, 2.25, 3x. ठीक है? So 0.909, 0.826, 0.751 and last is 0.683. So in short, after tax cash inflow is nothing but cash flows after tax. Income less cost. NPBDT करते थे, NPBT मिलता था, टैक्स करते थे, NPAT मिलता था, डेप्रिसिएशन करते थे, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स मिलता था. सो आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोज इज नथिंग बट CFAT, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स. ठीक है? So can you tell me how much is this PVCI? This PVCI, I guess it comes to 5.660x. ठीक है? And that 5.660x divide 801875 by 5.660x. So you will get minimum lease rental of 141,674. Are you following? So year 1 में 141,674 would be my lease rental. Year 2 में कितना हो जाएगा? 141,674 into 2, 283,348 हो जाएगा. Year 3 में क्या हो जाएगा? 141,674 into 3 and year 4 में 141,674 into 4. Are you following everyone? So this part is little tricky.
Understood? So minimum lease rental X comes to 141,674. फर्स्ट ईयर में आपको इतना लीज रेंट चार्ज करना चाहिए इफ यू आर यूजिंग यूओपी मेथड. ईयर 2 में कितना लीज रेंट चार्ज करोगे? 141,674 into 2. Likewise for year 3, likewise for year 4. And ऐसे करते करते you will be able to recover your original investment minus tax shield on depreciation. ठीक है? Followed everyone? So this was a good question. Just one point I missed out over here कि cash inflows मैंने गलती से before tax ले लिया था. I forgot to implement, I forgot to give the effect of tax. हमें cash inflows after tax ही लेना है. That is a very standard logic of this chapter. Which question? About which question? Can you repeat which question? Sir, हाँ बोलो. sir, there is a question. वहाँ पर sir given एक line कि further the company follows WDV method depreciation at the rate of 10%, but for tax purposes SLM method is used, considering that this is the only machine in the block of assets. हाँ. सर उस क्वेश्चन के आंसर में टर्मिनल कैश फ्लो की कैपिटल गेन टैक्स एंड होल ओवर क्वेश्चन में भी डेप्रिसिएशन को एसएलएम मेथड से ही किया हुआ है, डब्ल्यूडीवी से नहीं किया. हाँ, बिकॉज टैक्स रेट बोला ना कि फॉर टैक्सेशन पर्पस यूज एसएलएम मेथड. सो दैट्स व्हाई. सो कैपिटल गेन्स जो टैक्स होता है वो इनकम टैक्स में हम कौन सा मेथड लेते हैं? जो इनकम टैक्स में मेथड डेप्रिसिएशन का यूज करते वही लेंगे ना. सर बाकी कैश फ्लोज में भी वही वाला डेप्रिसिएशन का हाँ, मेथड. बिकॉज सी डेप्रिसिएशन का काम क्या है? टू गिव यू द करेक्ट टैक्स अमाउंट. सो टैक्स अमाउंट करेक्ट कब कैलकुलेट होगा? व्हेन यू यूज द करेक्ट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. Depreciation is irrelevant, I told you. The purpose for depreciation is to calculate correct tax amount. So correct tax amount कब आएगा? जब आप correct method of depreciation लोगे. Correct method for taxation purpose कौन सी है? SLM. So SLM is used. ठीक है? ओके And capital gains में भी income tax है तो taxation purpose के लिए SLM method will be used. ओके सर. सर दो कंपनीज हैं, उनकी सेम ऑपरेटिंग रिस्क है, जिसकी वजह से हम उसका जो लीवरेज कंपनी होती है और जो अनलीवरेज कंपनी होती है उसकी वैल्यू हम इक्वेट करते हैं. सर अगर सेम ऑपरेटिंग रिस्क नहीं होगी तो फिर वो वैल्यू इक्वेट नहीं होगी. और फाइनेंशियल रिस्क भी देखना पड़ता है ना. फाइनेंशियल रिस्क दोनों कंपनी की सेम है, ऑपरेटिंग रिस्क दोनों कंपनी की सेम है, तो कंबाइंड रिस्क विल बी सेम. सर एमएम अप्रोच के अकॉर्डिंग जो अनलीवर्ड होती है और लीवर्ड होती है उन दोनों की हम वैल्यू इक्वल करते हैं, जो टैक्स ऐड कर देते हैं बस. Yeah, I think you are asking question on cost of capital. Today it is investment and dividend decisions. If you have any doubts in this chapter, you can ask that. Cost of capital chapter में कोई doubt है आपको? You can just email the query. ओके सर. ठीक है? ओके सर. Thank you all for the time. I hope this revisionary lecture created some value addition in your life, in your FM life, I would say specifically. Any other doubts, you can anytime email to the Board of Studies and they will revert back to you. The concerned faculty will be revert back to you. Okay? Thank you all. Thank you for your time. Sir. Tech team, I'm ending the session. Yes, thank you. Welcome.